Hello everyone and good morning. Guys, morning. You are able to hear me? Good morning, Yes, sir. sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. very good Thanks. afternoon. What Good about morning, sir. others? Good morning, sir. Morning. And guys, welcome back where we are going to make our package higher with the multi-cloud plus DevOps with AI skills. Sir, how the thing is, as you are already aware or you are a part of my batch, I'm just sharing my screen and I can show you first. We are streaming on the YouTube. Yes, after a very long time. Yes. Okay. And here is the link. If you wish to send it to your friends or anywhere, you can definitely invite your friends as well into our this streaming as well. Okay. Cool. Thank you. And yes, welcome back to the Multi-Cloud Plus DevOps with AI Batch series, 55 live sessions, which we are learning and upskilling ourselves. Guys, do you feel like we are upskilling? Yes, no? क्या लगता है आप लोग को? क्या बोलते हो? Yes, we are upskilling. Yes, every Upskilling? day. Yes, sir. Srinivas is telling. What about others? Parinita is also telling. What about Yes, others? sir. Yes, Yes, you are sir. upskilling. Yes, Yes, sir. sir, we are Yes, sir. upskilling. Yes, sir. You Yes, are correct. yes, Definitely, Yes, sir. Vikas. definitely we are upskilling Every day you ourselves. are feeling like we are learning something new. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Absolutely. definitely. Yes, sir. Yes, sir. And this batch is running from the last how many days? 45 days, Kareem, right? Yes or no? Uh, This batch has been started on 16th of Yes. March. Yes. Okay, and the date is 30th of April is today. Okay, cool. From 45 days, guys, I hope you all are happy. Just show me like this. अगर हो तो नहीं हो तो मत दिखाना और क्या पर इधर नहीं Honor. दिखा रही अच्छा दिखा रही है ओके कूल थैंक यू थैंक्स अ लॉट ओके मेरे बहुत सारे ये वो उड़ते हुए आ रहे हैं कूल थैंक यू थैंक्स अ लॉट चलो लेट्स स्टार्ट अवर लर्निंग ओके एंड एज पर द एजेंडा द टॉपिक इज डॉकर सर हाउ कम डॉकर केम भाई यस we are here we have completed the linux we have completed the aws okay we have completed the github and github and jenkins as well okay and in the yesterday class or day before yesterday class only we have created the jenkins master slave architecture okay so I'm making it clean. Okay. Now I'm coming here into the new module, module 5, that is Docker. Okay. Before going into the Docker, let's discuss something. Okay. Why we have to learn the Docker, what exactly the Docker is. Okay. And why the Docker requirement came or why the Docker need came. We are going to learn this all things and then we will completely move into the Docker. But I will tell you, as I'm always telling guys, if you have a 2 years, 3 years, or 4 years of experience, you are feeling like you need a better package. Okay. You want to upskill, you want to switch something. Okay. Then Docker is the topic or Docker is a tool which must have to be in your resume. Okay. So I'm always telling this is a shortcut for your better package. मतलब Docker आपको लिखना ही लिखना है in your resume. Okay. Cool. Now at the end of this 3 days, just 3 दिन के अंदर हमें ये पूरा समझ में आ जाएगा कि what exactly the Docker file is, what exactly the Docker images is, how the Docker image has to be pushed, or how the container has to be get created from the image, and how the images has to be taken into any of the Kubernetes environment. This is the flow which we are following. Okay, I will tell you in a very straight or very simple way. Docker file is a document, or we can say a text file where some syntax has to be get written. Okay, just tell me how many keywords you know in the Docker, or जो experienced person, please let me know Docker how many PS. keywords. Docker नहीं ये तो PS. कमांड हो गया नहीं अरे ये कमांड हो गया ये Sir, कमांड हो it is गया containers Okay. भाई in नहीं which we can क्वेश्चन सुनो guys listen the question सुनो डॉकर फाइल के अंदर inside the docker file how many keywords or syntax has to be written okay first मैं help कर देता हूँ from पहला word Docker आता है file. from Run correct command, from run copy, from run and cmd add work directory directory, okay expose, expose correct हो गया entry खत्म entry Entry point, point. entry point. okay okay entry point okay maintainer 10 कीवर्ड भाई बस 10 लाइन अगर आपको पता है तो यू आर 90% ऑफ द डॉकर रिक्वायरमेंट यू कैन फुलफिल इट सिर्फ 10 कीवर्ड से जो अभी बात बोले ना जो वैशाली बोल रही थी या आप लोग बोल रहे थे यस दिस 10 कीवर्ड्स आर रिक्वायर्ड ओके इन्हीं 10 कीवर्ड से हम लोग उनको एज ए कंप्लीट सेंटेंस की तरह लिखेंगे और वी कैन क्रिएट अ इमेज बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट ओके डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेयर द सिंटैक्स और द टू इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपिंग एनी ऑफ द इमेज मींस इमेज के अंदर क्या चाहिए कैसे चाहिए how it should react, that all information has to be written into the Docker file. ये फाइल मोस्टली DevOps और डेवलपर मिलकर लिखते हैं ओके
ओके, और वी कैन से अगर आपके पास वार फाइल या जार फाइल है, ओके, दिस वार फाइल और जार फाइल हैज टू बी गेट एडेड, ये जो डेवलपर ने बनाई है, ओके, वो हम लोग सीआई से बनाकर आए हैं, ओके, द वार फाइल हैज टू बी गेट एडेड, यहाँ पर कॉपी या रन टाइम में कर कर ऐड करेंगे, आई विल वी विल डू इट, हम लोग सब करेंगे, जस्ट हाई लेवल आई एम टेलिंग, दिस वार फाइल हैज टू बी गेट एडेड, और उसको कंटेनराइज बनाने के लिए वी हैव टू राइट अ डॉकर फाइल, आफ्टर द डॉकर फाइल क्रिएटेड, a command, only one command, what is the command? Docker Docker build. build. Docker build. Docker build. Okay, docker build command run होगा and the image will be created. Okay, अगर image बन गई तो what exactly it is, जो भी कोड था, कोड से कंप्लीट आर्टिफैक्ट्स, अभी हम लोग जब CI रन कर रहे थे तो गाइस pom.xml फाइल थी, राइट, pom.xml फाइल, pom.xml फाइल व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग, कोई बोल पाएगा? Configurations. Configurations or Container Better answer. dependencies. इट इज डाउनलोडिंग द डिपेंडेंसीज फ्रॉम मेवन सेंट्रल, करेक्ट, ये मेवन सेंट्रल से डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रही थी, तो भाई डाउनलोड करके वो कहाँ रख रही थी, ओके, वो तो आर्टिफैक्ट्स की लोकेशन में या अपने लोकेशंस में रख रही थी, अब दिस ऑल थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड होगा, बाइनरी, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीथिंग विल बी पैक्ड एज ए इमेज इनटू द डॉकर, ओके, और अब इसको वी हैव टू सेव इट, तो वेयर वी कैन सेव इट, we can save into the artifact location docker hub, okay, with the command, what is the command? Docker push. Docker push. Docker push, okay, and it will be saved into the artifact location, okay. अब who will push ये image build का command कौन रन करेगा? Pure DevOps engineer, okay, जिसको मैं DO लिख रहा हूँ, Pure DevOps engineer will do this activity. Push कौन करेगा? Pure DevOps engineer work, मतलब ये आपका वर्क है, अंडरस्टूड? यस नो, समझ में आ रहा है? ओके, Yes, उसके बाद डॉकर पुल, यस, जब भी इमेज की रिक्वायरमेंट होगी वी विल पुल इट, ओके, इन आवर एनवायरनमेंट, कहीं पे भी जहां पे भी जरूरत होगी, ओके, वी विल टेक इट, डेव एनवायरनमेंट, क्यू एनवायरनमेंट, प्री प्रोड, जहां पे भी जरूरत होगी वी विल टेक इट, और उसके बाद हम लोग एक कमांड रन करेंगे, डॉकर रन, एंड व्हाट विल हैपन, द कंटेनर विल बी क्रिएटेड, इमेज को, अगर ये इमेज तो एप्लीके इट्स अ पैक्ड वर्जन बॉक्स, ओके, अगर इसको रन करेंगे, व्हेन वी रन इट देन इट विल बिकम अ कंटेनर, ओके, कंटेनर मींस इट्स अ रनिंग एप्लीकेशन, सिंपल, ओके, अब अगर if it's a 1 2 5 10 15 20 containers हुए, well and great, बहुत अच्छी बात है, okay, we can manage with the help of commands, okay, let's assume if it's thousands of containers, do you feel like you can manage with the help of commands? कर पाओगे manage command से? Not possible, guys. No. We cannot Possible. manage this thing with the help of commands. So we have to need a container management system or container orchestration system to make the automations. Make sense? Yes, no? yes, yes. That's why, and Yes. after that, the Kubernetes will come into picture. So मुझे 4 दिन चाहिए. I need 4 days to explain you the Docker. Okay. उसके बाद we will move into the Kubernetes part. Okay. Cool. Thank you. Okay. Sir, क्यों पढ़ रही हूँ? Why? Because there are so many different types of architectures are there, and out of that different architectures, okay, one of the architectures is our plant. 4 दिन बाद इनमें से out of 1 to 6, okay, which one will be created for Docker and Kubernetes? बोलिए बोलिए, which one? Microservices. 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 Microservice Yes. based Microservice. architecture. Microservice. Correct. Microservice based architectures we will develop with the help of Docker and Kubernetes. तो भाई अब हमारा फोकस इस एरिया पर है, ओके, अभी जो मास्टर स्लेव और जो हम लोग बाकी चीजें पढ़ रहे हैं उनको पार करके अवर फोकस इज प्राइमरली ऑन द माइक्रो सर्विस पार्ट, इसी पर एक प्रोजेक्ट भी डेवलप कर देंगे, मेक सेंस? yes sir. ओके सर, ये थोड़ा सा आई नीड एक्सप्लेनेशन, ओके कूल, मैं बताता हूँ, ओके, सी व्हाट एग्जैक्टली द माइक्रो सर्विस विल डू, आप डॉकर से डिफरेंट इमेजेस और कंटेनर्स बनाओगे, करेक्ट, राइट, इमेजेस और कंटेनर, यार इमेज अलग अलग इमेज हुई, ये तो अलग अलग कंटेनर्स हुए, तो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हो गया, ये सुनो, सब अलग अलग हो गए, तो Yes. राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, फ्लिपकार्ट, ओके, फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड, ओके, फ्लिपकार्ट, चलो अपन फ्लिपकार्ट ही चलते हैं ना, ओके, दिस इज अ फ्लिपकार्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, भाई ये तो फ्रंट एंड है, सर दिस इज द फ्रंट एंड, करेक्ट, होम पेज, राइट, if front end service will run तो front end आएगा, okay, उसके बाद यहाँ पर if I click on this chair, okay, what exactly will come, products, okay, ये बहुत सारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई है, करेक्ट, रिलेटेड टू चेयर, ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंटेलिजेंस, ओके, जिन्होंने ये परचेस करी है उनको ऑप्शन आ रहा है कि हाँ यू कैन परचेस दिस ऑल्सो, करेक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइस, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर,
भाई ये सब डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आर रनिंग, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स आर रनिंग. ओके, बेस्ड ऑन दैट दिस थिंग इज हैपनिंग एंड एट द एंड दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. ओके, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, आई क्लिक ऑन दिस. ओके, एज सून एज आई क्लिक दिस इज द प्रोडक्ट पेज. करेक्ट, प्रोडक्ट का स्पेसिफिक, वो प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग था, इससे पहले वाला प्रोडक्ट कैटलॉग था. नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट पेज. If I click on buy now, payment service will come into the picture. Correct? If I will click on login, I will be logged in. If I will click on add to cart, so the things will be added into the cart. Right? Yes or no? So these all different services are there. In simple short, I would like to say microservice based application is a different application working together. Okay, that is called microservice based architecture in one simple language. You guys understood? Simple language में समझ में आ रहा है? Yes, no? Yes, Yasmin, sir. Azad, Anurag, Yes, Imran. yes. Yes, sir. Yes, sir. What is the benefit? Sir, ऐसा small parts को run करके क्या फायदा? What is the benefit? The biggest benefit is if one service goes down, okay, whole application cannot be get affected. Okay, only the particular area will be affected. Let's take an example. Mohit want to make the payment. Okay, and let assume payment service is affecting. So it will be Mohit will be affected. Mohit will not say कि website is not working. Website and everything is working, but only the payment part is affected. So only payment service need to be get fixed or whatever it is, right? Yes or no? So other things can be Yes. possible. Okay. So like that loosely couple होती है यहाँ पे. Okay. The thing is like in simple keyword I can say every service is connected with each other, but if one service goes down, it will not affect the whole application. तो इस सिनेरियो के लिए we have to create a microservice based architecture of applications. Yes. Make sense? Yes, no, yes, no. Yes, sir. Yes. Good, thank Sir, you. here the user is a Docker client, right? Users base. Okay, see, ये सब जो बनेगी, okay, all the images, containers will be created, okay, with the help of Docker only, okay, और इनको automations और management thing will happen with the help of Kubernetes. तो हमें दोनों को combine करके ही चलना पड़ेगा, okay. Some people will say, sir, I'm very new into the Docker and Kubernetes. So let me start from very basic, बहुत basic से, Yes, okay. sir. You can see this is a logo of Docker, okay. Who will explain me the logo of Docker? बता दो भाई, इतना सिंपल कोई नहीं पढ़ा था, पर पता होना चाहिए. गो अहेड. लोगो ऑफ डॉकर. हाँ, See, यस it's रजनी. like a Sir, dog. this yes. The shipping Raise your of the hand, raise your Ship hand. that containers. is taking containers from one place to another place. Okay, something look like ship. Okay, going from one place to another. कहाँ से कहाँ जाएगी भाई? डेव environment पे डेवलप होगी. Okay, and it will move into the QA environment, pre-prod environment, correct, और prod environment. Okay, different environments पे जाएगी. ठीक है, cool. और क्या दिख रहा है भाई? शिप दिख रही है, और what else? हाँ, शनी, go ahead. Containers दिख रहा है. Containers. It is Containers. carrying the containers. So It is Shared part of containers, which different works on. applications. ship is carrying some containers और applications. Okay, मतलब ये Yes. applications और containers को लेकर एक environment से दूसरे environment में लेकर जा सकते हैं with the help of Docker. In short, the term definition. Okay, with the help of Docker we can build. Okay, One. build, run. Okay, and ship. Okay, the applications from one environment to another. Simple. Got it? Yes, sir. इतना ही है, इतना ही. Okay, that is Docker. Okay, we can build the applications, we can build the containers, we can run the applications, we can run the containers, or we can ship the images or containers, ship the images from one environment to One another with environment to the help another of environment. Docker. Okay, thank you. Hmm. What is this logo says? ये logo क्या कह रहा है? क्या go ahead, वैशाली. It's basically management of the containers that we are carrying in different environment. अरे आप तो logo It's बताओ, ये orchestra- logo क्या कह रहा है? What this logo says? Ship मेरा steering. question, what this logo Orchestration. says? Navigating. Steering. Like This is a handle. navigator. The helm of the Steering. ship. It is Ship, driving symbol. ship steering. Navigator or controller. This is basically saying Okay, simple. I can say it's a steering, okay, which will help the Docker to navigate the things, okay, which we can navigate. With the help of this steering or this orchestration tool, multiple Docker can be get managed. Okay, so simple. What exactly this logo or this Kubernetes is? It's a Docker management system, container management system, or better word, container orchestration system with the help of Kubernetes. Correct? That's it. Okay. This is the major difference into this part. अब यहाँ पे what exactly the difference is? यहाँ पे build, run और ship होगा, और यहाँ पे managements होंगे, automations होंगे, orchestration related activities होंगी. Okay.
That's it with the help of Kubernetes. Understood? Type you into the chat box. You into the chat box. You. You. बस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर और क्या ओके हम पढ़ने के वाले ओके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ओके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मशीन व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम इनटू द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वर्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट वेज हाइपरवाइजर एंड देन ये सब प्रॉब्लम्स को समझते हुए व्हाट आर द चैलेंजेस आर कमिंग इनटू द आईटी ओके और व्हाई द डॉकर केम इन द पिक्चर हम लोग ये चीज समझे इफ यू अंडरस्टूड दिस आपका टारगेट मिनिमम मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग मिनिमम टू मैक्सिमम अप टू 10 एलपीए यू कैन एबल टू ओके उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉकर ओके व्हाट एग्जैक्टली द डॉकर इज व्हाई वी हैव टू लर्न व्हाट आर द नोट्स इज व्हाई द शिपिंग इज व्हाट आर द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द कंटेनर्स यूज केसेस एंड सो मेनी थिंग रिलेटेड टू द डॉकर वी आर गोइंग टू लर्न ओके चलो अब नाउ very first point. Okay, what exactly the virtual machine is? What do you think about virtual machine, guys? Raise your hand, come up on the camera, and speak up. What do you think about the virtual machine? क्या होता है virtual machine? Yeah, Manshu, go ahead. What exactly the virtual machine is? Sir, a virtual machine is I will say it's a computer इतना only क्यों टेंशन ले रहे हो that इंटरव्यू सी यू डोंट हैव टू दैट मच वरीड इन द इंटरव्यू ओके बोलो व्हाट exactly the virtual machine is. sir, a virtual A machine machine is a computer that has been created in a virtualized environment. Means this particular machine can be given to multiple users at a time, um, and multiple Single users machine can be can used by utilize it. single machine can be used by multiple users. Multiple One point. users. Okay, ठीक है. Virtually available someone else machine with the help of internet or with the help of virtualization technology. We are accessing someone else machine that is virtual machine. ठीक है. 2 points are Virtual good. machine. Okay. a Yeah. remote machine which is handled by SSH. Okay, which can be if Simulation it's of a physical. virtually available. आराम से मेरे को explain करो. If it's a virtually available with the help of SSH or RDP options, we can access the machine. ठीक है. मोहित भाई बोलिए. Yes. It is kind of an operating system where the all the applications are working on the hypervisor, and also like each application has its own OS. So that's the all the high memory required for in the VM. What Mohit is trying to say, there is a base hardware. Okay, on the base hardware, एक base operating system है. On this base operating system, we are adding the what we can say emulator Hypervisor. kind of thing, which is hypervisor. Okay, and with the help of hypervisor, we can use some guest operating system or अलग-अलग virtual machines we can able to create it. Right? Means एक base machine पर हम लोग अलग-अलग flavors के different operating system we can run it. Good. This is called virtual machine concept. Okay, cool. Yeah, Vaishali, go ahead. I Rajiv, think your hand is up. Mohit has answered my question. So अच्छा मोहित virtual ने दे दिया machine, ठीक है so virtual machine is basically technology. Basically, we can use the software layer of hypervisor layer to create a different operating system to launch in a different kind of environment. makes sense. It's a emulator of the physical system. Okay, this guy virtually we are accessing it. Someone else machine with the help of internet we are accessing that is called virtual machine. Correct? In simple. Okay, cool. दैट्स इट आपने सारे पॉइंट्स बोल दिए दैट्स रियली गुड ओके यही मेरे पास भी थे ओके सेम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे होते हैं वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिएगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी कैन टेल एज अ वर्चुअल मशीन ओके वर्चुअल मशीन विल बी फिजिकली अवेलेबल होस्टेड विद सम प्रोवाइडर किसी के पास वो अवेलेबल है एंड ही गिवन द एक्सेस और बिकॉज ऑफ द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू एक्सेस समवंस एल्स मशीन ओके दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन ठीक है Mohit ka answer. Okay, what Mohit was trying to say. Okay, how virtual machine has to be get created. Hardware होगा. Okay, heavy hardware होगा. Okay, heavy hardware. Okay, heavy hardware. Then over that एक operating system यहाँ पे चाहिएगा. Host operating system या main operating system. Host operating system will be required. And then hypervisor एक emulator type से एक software आएगा और एक software आएगा. There are multiple softwares available into the market which are coming into the chat box. भाई चैट में देख के बोलो क्या क्या आ रहे हैं VMware okay VMware, okay Oracle ESX virtual Test, box Oracle virtual box
different softwares are there. Okay, we have to enable the virtualization. हमें virtualization enable करना होगा, ये software install करना पड़ेगा. Then guest operating system bring करने होंगे, कहीं से तो लाने पड़ेंगे, right? From the website, internet, we have to download it. और उन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनके लिए फिजिकल वर्चुअल मेमोरी देनी पड़ेगी, राइट? डिस्क स्पेस देना पड़ेगा, सीपीयू अलोकेट करने होंगे, करेक्ट? एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स. गाइस, यू अंडरस्टूड द बेसिक आर्किटेक्चर? समझ में आया? ये ऐसा दिखता है, करेक्ट? यस, नो? अब यू कैन थिंक इन ए क्लाउड ऑल्सो. ये क्लाउड, ये आप सी, अब आपके पास योर वे, आप इसे लैपटॉप के नजर से देख रहे हो कि एक हैवी लैपटॉप हुआ, उसमें मैंने विंडोज डाला है, आफ्टर विंडोज हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और यू डिड इट. पॉसिबल, करेक्ट? ओके. यू कैन सी एज ए डेटा सेंटर. ओके, डेटा सेंटर ने एक हैवी हार्डवेयर रैक्स बनाई है. ओके, आफ्टर दैट ही पुट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ही इंस्टॉल द हाइपरवाइजर एंड ही गिवन द वर्चुअल मशीन टू यू विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज. ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आइडियली होता दोनों सेम ही है. Guys, understood? Yes, no? Yes, sir. Now, Yes, sir. Yeah. thing is, okay. Now the thing is, sir, हमें तो heavy hardware, we need heavy hardware, we need hypervisor, best operating system again is required. Yes, bhai, these are the bare minimum things are required to create a virtual machine. Okay, good. If we have to create it, okay, अगर हमें करना है, okay, what we required? पहले तो heavy hardware चाहिए. Okay, if you are thinking your laptop, okay, I will say first you don't have to do, नहीं करना. Okay, बिकॉज आई कैन अज्यूम, अज्यूमिंग कर रहा हूँ बस. ओके, 7, चलो मेरा लैपटॉप. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, माय लैपटॉप. वेयर इज माय सीपीयू मेमोरी? ओके, इन माय लैपटॉप आल्सो आई विल ऑलवेज प्रेफर द पर्सन जिसका सच में 50% मेमोरी इज फ्री. डू यू हैव द 50% मेमोरी और 50% सीपीयू इज फ्री? जस्ट चेक कर लो अपने पास, अभी फ्री है, देन यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल. नॉट एट ऑल, नहीं है, नहीं है, ठीक है? तो आपको तो I बिल्कुल भी नहीं have है. the VM and Linux and window in my laptop, office laptop. हाँ, ठीक है, दैट्स ओके, मतलब अच्छी बात है. इफ यू हैव, वेल एंड गुड. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? भाई मेरे को तो अभी तक सबके आंसर नो आ रहे हैं, चैट में देख लो. सर नहीं है है रनिंग 50? है VM. अरे हाँ, तो एप्लीकेशन तो रनिंग होगी ना भाई, एप्लीकेशन रनिंग के बाद ही तो आप वीएम बनाओगे, करेक्ट? Yeah. ओके. दीपक, एक दीपक का आंसर आया है, अमन इज टेलिंग यस. ओके, ठीक है, 2-3 लोग हैं, चलो कोई बात नहीं. इज हुएवर हैव दिस थिंग, ओके, जिसके पास है, यू वांट टू डू इट, देन आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है. ओके, बट इफ यू डोंट हैव, हम तो सब क्लाउड पे करेंगे. ओके, डॉकर भी इंस्टॉल क्लाउड पे करेंगे और कुबरनेटिस भी क्लाउड पे करेंगे. नो नीड टू डू इनटू द लोकल एनवायरनमेंट. गाइस एग्री? यस और नो? Yes, sir. और यू हैव टू से द सेम इनटू द इंटरव्यू एज वेल. ओके, भाई कौन करता है लोकली आजकल? कोई नहीं करता. ओके, वी हैव टू डू इट इनटू द क्लाउड. बस आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, हाउ एग्जैक्टली इट विल. ओके, द फ्लो विल बी लाइक, वी विल गो इनटू सम वर्चुअल बॉक्स एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे. ओके, उसके बाद कुछ इमेजेस डाउनलोड करके वी कैन क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन और ये इमेजेस रन कर सकते हैं. इस तरह से हम लोग लाइनेक्स, मैकओएस या एनी फ्लेवर वी कैन रन एज अ वर्चुअल मशीन इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके, यही तरीका है. होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आई विल कंसीडर मोस्ट ऑफ द पीपल एज विंडोज. उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर और ओरेकल वीएम बॉक्स और VMware सॉफ्टवेयर वर्कस्टेशन वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट वर्चुअल मशीन. बट आई विल नॉट प्रेफर दिस वे, आई विल प्रेफर दिस वे. ओके, क्लाउड वे, we can go to any of the cloud and create a virtual machine. That's it. Okay, AWS, GCP, Azure, anything which wherever you are preferred, we can go into that and we will create the machine. Okay. Now we talk, or you talk about the what is virtual machine. Now tell me the what is the benefit of advantages of virtual machine. Go ahead. क्या benefits हैं? Guys, one by one, you can see the screen if you want. You want to speak, you can speak up. Okay. मोहित का first point already cover हो रहा है यहाँ पे. मोहित बोल दो क्या है? What exactly it is? In That's the a one, multiple OS environment. in the one host machine or one host machine, we can run the multiple operating systems. Right? क्यों सर, क्यों करना है? Why we have to do it? Give me the example. Better utilization. Faster provisioning. Yeah, resource utilization, cost saving. Parallel execution, we can run all that. So we can test an application like We in can multiple test. environments. Okay, let assume you develop some application. Okay, आपने कोई एक application बना दी है. Okay, and you have to test into the Linux, you have to test into the CentOS, you have to test in different flavors. Okay, तो एक ऑप्शन है कि भाई तीन लैपटॉप परचेस कर लो. करेक्ट? राइट? यस और नो? दैट इज अगेन अ कॉस्ट विल कम. ओके,
Okay. Now another option is you can create a virtual environment. Install करते हो अलग-अलग flavors की, and then take the your what we can say whatever your application is into that different environments or different operating system and test it. One of the use case. Is understood? Right? ये आपको कोई रन कर, हाँ, टेस्टिंग इज द मेन रीजन, ओके, प्राइमरी ये डेवलप करना है कि हमें सेंटोस में ही और वी हैव टू डेवलप इनटू द लाइनक्स, तो वी कैन गो इनटू दैट एनवायरनमेंट एंड वहां पे डेवलप भी कर सकते हैं, बोथ द थिंग्स आर फाइन. First is okay. Second, what are the advantage? Another advantage. Costing, obviously, costing will be saved. Okay. Otherwise, if we created three different environments, okay, physically, then three times of the cost will be there. Okay. In the single cost, we can use it. Point, valid point. Yes, go ahead. Please, others, bolo. Baki log And raise your hand and answer. Raise your hand. pay Raise your hand. what we use. Raise your hand. Raise your hand. Up, hath. No maintenance Raise your cost. hand. Ajit, yeah, go ahead. What is the advantage of virtual machine? I mean, we can pay what we use. कहाँ And पे pay based करना on है? the, आप तो क्लाउड में I चले गए, mean, आप तो क्लाउड में, चलो ठीक है, हाँ, वी कैन पे व्हाट वी आर यूजिंग I इट, ठीक है, mean, वी कैन रिलीज इट, ठीक है, based on the ओके, CPU utilization, based on the RAM utilization, I mean, memory, मेक RAM, सेंस, whatever. ठीक है, मेक सेंस, ओके, यस. मोहित, गो अहेड, व्हाट इज योर Faster पॉइंट? provisioning. फास्टर प्रोविजनिंग, यस, पॉसिबल गाइस. आई थॉट कि मुझे एक लाइनक्स फ्लेवर चाहिए, विद इन 2 मिनट और 3 मिनट्स आई कैन क्रिएट इट, आई कैन जनरेट इट, ठीक है, ओके. हाँ, देवराज, गो Easy अहेड, विशाल, गो deployment. अहेड. Easy management. Let assume from the single hardware or single place, I'm creating my small data center और मैं उसको easily manage कर पा रहा हूँ. Well and good. Right. ठीक है. Yeah, Mohit, go ahead. Devesh, go ahead. Yes, What is your point? yes, because so using the snapshot, we can save the state of the virtual machine. So suppose anything is crashed, then we can roll back things using that snapshot that we can do from the virtual We can machine. take the snapshots, or if we want to go the previous version, we can go with the virtual machine. ठीक है. Single hardware के CPU memory is getting used. Okay. Single electricity or power or energy will be consumed. Okay. Right. ठीक है. और Basically, yes, better Vishal, go resource ahead. utilization. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा. ओके, ठीक है, विशाल, गो Infra अहेड. Yeah. we can use infra. ठीक है, हाँ, इनडायरेक्टली वी कैन से यस, ठीक है. मोहित, गो अहेड, बोलिए, मोहित सुन क्या Yeah, रहे हो, बोलिए. we can scale up and scale down the resource. ओके, एज पर द नीड वी कैन स्केल अप और स्केल डाउन. Scale नहीं, down. स्केल अप और स्केल डाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एज पर द नीड वी कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ द मशीन इजिली. ओके, Yeah, ये कह सकते yes, हो. yes. ओके, क्योंकि स्केलिंग थोड़ा टफ हो जाएगा ना. सी इन योर बेस मान लो 32 GB रैम, ओके, यू नीड ए 64 GB रैम, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट. Yeah. तो स्केलिंग इज डिफिकल्ट, ओके, बट मैनेजमेंट इज इजी. ओके, स्केलिंग इज ए डिसएडवांटेज, स्केलिंग आएगा डिसएडवांटेज के अंदर. या विशाल, एनी अदर पॉइंट? Before No, we move ahead with the legacy supports, so we can test, we can also provide the operating system, all those things that were before, into migrating it to something new, modern things. So टफ हो, ये थोड़ा टफ हो गया, ठीक है. चलो, आई विल टेल इन सिंपल वे. सिंप्लीफाइड डेटा सेंटर मैनेजमेंट, नो डेटा सेंटर रिक्वायर्ड. ओके, हम लोग अपना खुद का डेटा सेंटर मैनेज कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग द वर्चुअल मशीन. फास्टर प्रोविजनिंग और एप्लीकेशन और रिसोर्सेज इज पॉसिबल. क्विक एक्सेस टू द एप्लीकेशन. लोकली आप लोकल होस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो. ओके, फास्टर इंटरनेट कनेक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड. ओके, लो एज एनर्जी कंजप्शन, लेस एक्सपेंस टुवर्ड द मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज एक ही तो है, इनडायरेक्टली इट इज वन, राइट, एंड वी आर मैनेजिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, कूल. These are the advantages. What is the It is easy to disadvantage? restore also. Easy to destroy, correct, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है. Restore, What are the restore, disadvantage? restore. Restore, ठीक है, हाँ, easy to restore also is possible. Okay, guys, what is the disadvantage? It's a high RAM required, and each operating system has its own First OS. point, base machine should be very heavy. Okay, पहली requirement We में base we machine we heavy we would चाहिए. be having a limitations for the resources. We have lot of limitations. Okay, हम scale नहीं कर सकते, auto scaling नहीं कर सकते, right? In the Hardware template, we cannot create multiple machines are not quickly, right? infinite. Many times the machine will be hanging. Correct. Okay, चलो, और what is the biggest disadvantage? You will assume, okay? Cost will be very high. नहीं, चलो, there okay, will be a चलो, single now point of I'm failure. my mind. Every Okay, हाँ, if any point of total failure, infra will okay, be the cost. If any issue on the hypervisor, so it will down all the VM machine and it will impact all the environment that time. ओके, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा. ओके, हम लोग आई टोल्ड, मैंने अभी बोला था कि डेटा सेंटर मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग इजी हो जाता है, बट व्हेन द स्केलिंग वर्ड केम, इट्स अ हेवी, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक. ओके,
अब चलो, अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, अभी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। ओके, लेट अज्यूम whoever want to do it, guys, it's not mandatory for everyone, सबको नहीं करना है ये वाला। ओके, we can download one virtual box, उसकी बेसिक प्री रिक्वेस्ट है। ओके, फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट इज योर 50% मेमोरी इज फ्री, सीपीयू शुड बी फ्री, अगर फ्री है। ओके, एंड देन come to the CPU, and if virtualization enable, ये थ्री थिंग्स किसके लैपटॉप में हो रही है, हाउ मेनी पीपल हैज द थ्री थिंग्स अवेलेबल, virtualization enable, 50% CPU and memory is free, कितने लोग हैं ऐसे? Me, type me into the chat box. शान के पास है, ठीक है, विश्वजीत के पास भी है, नौशल के पास भी है। ओके, देन यू कैन डू दिस प्रैक्टिकल, आप कर सकते हो। ओके, यू आर एलिजिबल, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, अब थर्ड थिंग, वर्चुअलाइजेशन हैज टू बी इनेबल इन एवरी लैपटॉप। ओके, आपके पास होना ही चाहिए वर्चुअलाइजेशन इनेबल। गाइस, एनीवन हियर जिसके में डिसेबल हो, वर्चुअलाइजेशन इज डिसेबल? एनीवन? नहीं होगा यार, नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। ओके, एवरीवन वर्चुअलाइजेशन इनेबल है? गाइस, वर्चुअलाइजेशन इनेबल एवरीवन? नाइस, बहुत अच्छी बात है, मेरे में बहुत अच्छी बात डिसेबल्ड है। है सर। डिसेबल्ड है, ओके, इट्स पर्सनल लैपटॉप और ऑफिस लैपटॉप? पर्सनल लैपटॉप। पर्सनल लैपटॉप, ओके, विच कंपनी लैपटॉप? HP। HP, ओके, तो गो टू द यूट्यूब पे जाना आफ्टर द क्लास। ओके, HP वट एवर इज योर मॉडल, ओके, उस मॉडल को सर्च करना, एंड जस्ट सी वन वीडियो, इनेबल वर्चुअलाइजेशन, और इनेबल वर्चुअलाइजेशन विथ बायोस, ये बायोस की सेटिंग से चेंज होता है। ओके, मैं इन शॉर्ट आपको इनडायरेक्टली आंसर दे देता हूँ, विच इज ए जनरल आंसर, या तो आपके लैपटॉप में बायोस का F10 या F12 या F11 कोई की होगी। ओके, आप उसे की करोगे तो योर लैपटॉप विल गो इनटू द बायोस। ओके, वो बायोस पे चला जाएगा। देन लास्ट ऑप्शन आता है, वीडियो देखना, लास्ट ऑप्शन विल कम, उस ऑप्शन में एक आएगा कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल और डिसेबल का एक ऑप्शन आता है, बस दैट्स इट, उसको वहां से इनेबल डिसेबल कर लेना। ओके, अगर डिसेबल है तो इनेबल कर लेना, और इनेबल ही चाहिए तो डोंट डू एनीथिंग। ओके, बेस्ड ऑन योर लैपटॉप, लिटिल बिट बेस्ड ऑन कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट कीज आर डिफरेंट, बाकी एक्टिविटी सेम होती है। तो जस्ट सी द यूट्यूब वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी लैपटॉप का देख लेना। ओके, दैट्स इट, कूल। ओके, तो उसको इनेबल इज रिक्वायर्ड। ओके, आफ्टर इनेबलिंग, अगर आपका प्री रिक्वेस्ट इज पास, वी कैन गो टू दिस लिंक, whoever is getting pass, जो लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा पास है, ठीक है, तो यू कैन गो इनटू द सॉफ्टवेयर, ओके, एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। ओके, मैंने अभी विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर किया, इफ यू आर इन मैक के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर 170 MB सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल और डाउनलोडेड। ओके, अब ये सॉफ्टवेयर मतलब ओनली द हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड। ओके, इन दिस इमेज अभी तो मैंने सिर्फ हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, वी नीड ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो, करेक्ट, यस और नो? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए भाई, बोलो विच ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ फ्लेवर यू आर लुकिंग, कौन सा फ्लेवर लें अपन, टेल मी एनी ऑफ द फ्लेवर। Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu, Ubuntu, ठीक है, हाँ, Ubuntu, CentOS, yes, most popular. Yes, so here this is the place, OS boxes, virtual box images, okay, ये एक वेबसाइट है। okay, we can go here and यहाँ से वीडियो इमेजेस we can take it, okay, let me show you। okay, पॉपअप्स आएंगे because this is a free website, okay, और यहाँ पे different different flavors are coming। okay, if you are looking for CentOS पे क्लिक करके go to the video image, okay, image पे जाकर, okay, and I'm going to the CentOS as well as Ubuntu। okay, Ubuntu, okay, Ubuntu and Ubuntu, this I'm giving you this two links, CentOS box, okay, ये वाला एक लिंक हो गया, और सेकंड हो गया Ubuntu OS boxes Ubuntu। okay, तो I'm just giving this two links, इन दो लिंक्स को आप ओपन कर लो ना भाई, दो चॉइसेस, CentOS या Ubuntu, अभी एक चीज बोल दो, एक चीज डाउनलोड करके देखते हैं, ओनली वन, विच वन? Ubuntu. बोल दो। Ubuntu करो सर। Ubuntu, he told Ubuntu, so I'm coming into the Ubuntu, and Ubuntu 25.4, जिसका नाम बल्कि पफिन है भाई, ये तो 2.6 GB का हो गया, ठीक है भाई, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट, यस और नो? यस, एग्री? अरे यस, नो? ओके, Yes. आई क्लिक ऑन दिस, मैं लिंक फिर से दे रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस लिंक, और आई एम क्लिकिंग ऑन डाउन, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ओके, based on my internet speed, based on your internet speed, भाई it will take minimum to minimum 5 to 10 minutes, करेक्ट भाई? स्टार्ट हो गया, मेरे को ले रहा है ये, नहीं यार 1 मिनट में तो नहीं होगा, चलो, फॉर मी इट इज टेलिंग 1 मिनट, भाई आप लोग को कितने मिनट बोल रहा है ये? 5 मिनट तो लगेंगे भाई, 5-10 मिनट्स लगेंगे। ओके, सी, चलो ठीक है, यू कैन डाउनलोड एज ए होमवर्क, ओके, आराम से होमवर्क की तरह लेकर यू कैन डाउनलोड।
मेमोरी नहीं, मेमोरी इंटरनेट स्पीड। ओके, आप इसे सिर्फ डाउनलोड करते हो। ओके, टेक इज होमवर्क, इसको डाउनलोड कर, ठीक है, कल इसको सेटअप करेंगे। अंडरस्टूड? यस नो? सर व्हाट इज द डिसएडवांटेज? एक डिसएडवांटेज समझ गए, हेवी इन साइज। इस एक प्रॉब्लम समझ में आई? यस नो? अरे यस नो, यस नो, यस नो। भाई अभी तो वो जिप फाइल है। ओके, जिप फाइल इज ऑफ 2.5 जीबी। ओके, मैं अभी अपना नोटपैड ओपन करता हूँ। ओके, आई एम जस्ट ओपनिंग माय नोटपैड। ओके, अब भाई एक चीज समझ में आई। ओके सर, 2.5 जीबी इज ए बेस इमेज, और जिप्ड है वो तो अभी। अगर मैं उसे अनजिप करूंगा तो हाउ मच इट विल हैपन? कम से कम 6 to 7 जीबी पे हो जाएगी। 6 to 7 जीबी। ओके, ठीक है। इफ आई विल पुट सम एप्लीकेशन इनसाइड इट, okay, at least 1 or 2 GB application size, correct? Yes or no? Application logs, okay, application data, okay, based on your size of the application. Okay, let's assume 1 GB app size, okay, 1 GB app size, okay, 2-3 GB के logs, okay, तो भाई minimum it will be go to 10 to 15 GB size ऑफ वीएम, और 50% हमें फ्री रखना पड़ता है, तो मिनिमम 30 GB के आसपास का हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम। एग्री? यस नो? बेयर मिनिमम 30 GB का स्पेस हमें देना ही। गाइस आर यू एग्री? यस नो? और नाउ इफ इट्स ऑफ 15 GB, अगर ये 15 GB, इफ इट्स ए 15 GB साइज, 15 GB, ओके, विच इज डेवलप इन डेव एनवायरमेंट, अगर ये डेवलप हुआ है डेव एनवायरमेंट में, तो भाई इसको टेस्टिंग के लिए तो क्यूए में भेजना होगा। 15 GB को कैसे सेंड करोगे वन प्लेस टू अनदर? डिफिकल्ट? यस नो? अरे यस नो? Yes, yes. ओके, इफ इट्स ए लोकल वीएम, अगर ये लोकल वीएम है तो कोलेब्रेशन भी नहीं हो पाएगा। कोलेब्रेशन इज डिफिकल्ट, कि भाई मैं मोहित वैशाली सब मिलके एक साथ काम कर लें, वो भी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये तो इंडिविजुअल बंदे को ही करना पड़ेगा। गाइस यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेज समझ में आ रहे हैं? फर्स्ट डिसएडवांटेज, हैवी इन साइज, वी कैन नॉट मूव फन एनवायरनमेंट टू अनदर, बार बार रोज रोज नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट। ओके, सेकंड, कोलैबोरेशन इज डिफिकल्ट। ओके, दिस आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मशीन। इसकी वजह से दिस अप्रोच, ओके, ऑफ ये जो लोकल मशीन वाली अप्रोच है, ये फेल हो चुकी है आज से 5 साल पहले। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस नो? सर क्यों पढ़ा रहे हो फिर, हमारा क्यों हाफ ओवर आपने वेस्ट कर दिया? भाई प्रॉब्लम भी तो पता होना चाहिए, करेक्ट? यस नो? ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो वी नीड अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी नीड अ प्लेस जहां पर वी नीड अ सॉफ्टवेयर जो इसको लाइट वेट करे और कोलेबरेशन इजी हो जाए, एंड द डॉकर केम इनटू द पिक्चर। करेक्ट? ओके, ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग। ओके, एक ममता ने एक क्वेश्चन फेंका है गाइस। ओके, ममता has sent one question. She was telling this all problems are happening without cloud, right? We can move into the cloud, हम क्लाउड में मूव हो जाते हैं। तो क्या सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? व्हाट डू यू थिंक, प्रॉब्लम इज सॉल्व और नॉट सॉल्व? No. No. बोलो। No. Might be. No, it's not solved. Because still in It's cloud not also solved somehow, site will be चलो heavy. somehow, अरे चलो मैं मेरा टर्न, somehow थोड़ी सॉल्व हो गई है, ठीक है, चलो लो कोलेब्रेशन होने लगेगा। ओके, एक ही मशीन हम लोग मूव तो नहीं कर पाएंगे, बट साइंस वी कैन ट्रांसफर इट। ओके, वी कैन गिव द एक्सेस कि भाई यू कैन टेस्ट इट, राइट? ओके, एक चीज सॉल्व हो गई, बट प्रॉब्लम इज स्टिल। ओके, आपने बना दी नेटफ्लिक्स टाइप की एप्लीकेशन, करेक्ट? नेटफ्लिक्स टाइप की एप्लीकेशन, और इट रिक्वायर्ड thousands of containers वीकली। भाई इतनी वीएम्स बना रहे हो क्या आप? वीकली बना पा रहे हो? ये बताओ। कॉस्टिंग विल बी वेरी हाई। यस, यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes. कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वीएम बनाना पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे। ओके, अगेन इनडायरेक्टली वी हैव टू मूव इनटू द डॉकर साइड। ओके, जिसमें सब एक ही वीएम के अंदर स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स हो जाए, लाइट वेट इमेजेस आ जाए। ओके, चलो अब यहाँ पे, ओके, इट वॉज 15 GB, ये 15 GB था। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए जस्ट 15-15 मोर मिनट थ्योरी। ओके, 15 मोर मिनट थ्योरी, उसके बाद एटलीस्ट टुडे वी विल स्टार्ट विद द डॉकर। एटलीस्ट डॉकर की एक इमेज उबंटू डाउनलोड करके स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग इनटू माय पीपीटी अगेन। ओके,
we understood that virtual machine has some disadvantages. Actual problem in the size is very heavy. Slowness, transportation from one environment to another environment is very difficult. Okay, guys, agree? Getting my point? Each and every time VM create करना होगा, VM को delete करना होगा, राइट? हम लोग उसको चालू नहीं छोड़ सकते हैं. ओके, हेवी इन वेट, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, नॉट श्योर. अगर हम उस रिसोर्सेस को, इफ वी मेक द रिसोर्सेस अप एंड रनिंग, हमारा एक्चुअल बेस हार्डवेयर विल आल्सो गेट स्लो. करेक्ट? यस और नो? हम उसको परमानेंटली चालू नहीं रख सकते. तो दिस आर द सम एक्चुअल प्रॉब्लम व्हिच वी फेस इट. एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट पार्ट, ओके, हमें मूव करना रहता है वन इन्वायरमेंट टू अनदर. सर क्यों मूव करना है? लेट मी टेल यू. ओके, let's take an example. You have a static website, front end, background, database users, analytics, queues, बहुत सारी चीजें. To make any production level application, this all things will be required. ये सारी चीजों को हमें एक environment से another environment में बार बार we have to do it because of the testing, because of high performance, okay, quality check, quantity check, so many things. So we have to move all these things into different environment. And with the help of VM, if it's a heavy in size, it will be a big problem. We cannot move it. Guys, agree? Yes or no? Yes, sir. Right? Yes. That's why we have to make the size lesser. Okay? कैसे होगा? Okay? और चलो, I will take an example. सर सबको एक साथ पैक कर देते हैं कहीं पे और ले चलते हैं. No. Okay? If you think like that कि we can move from one place to another like this, it will be a problematic. सर क्यों problematic है? Because यहाँ पे चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये एक फोन है. ओके, दिस इज वन फोन. फ्लिपकार्ट सेल दिस फोन. फ्लिपकार्ट ने आपको ये फोन सेल किया है. ओके, एंड फ्लिपकार्ट ने फोन की जगह आपको सारे पार्ट्स दे दिए हैं. ही गिवन द पार्ट्स टू यू. 20-30 sensors are there, screen is there, battery is there, mic, speakers, different things. Okay, and he told you have to assemble by own. कर पाओगे ये फोन असेंबल खुद से? No, sir. राइट? आई विल टेक एन एग्जांपल. ये चेयर आई थी. ओके, फ्लिपकार्ट से ही ली थी मैंने. ओके, ये खुद से असेंबल करनी पड़ी. तो पहले तो उसके 2 यूट्यूब के वीडियो देखने पड़े, फिर भी गलत सेटअप हुई. राइट? इट्स अ प्रॉब्लम. यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग? यस और नो? Yes, sir. तो द प्रॉब्लम इज लाइक, सी, असेंबलिंग इज अ प्रॉब्लम. और जब असेंबलिंग उन्होंने तो सी फ्लिपकार्ट और व्हाटएवर इट इज, दे टोल्ड कि सर हमने सारे प्रोडक्ट भेजे हैं, लेट अज्यूम वन प्रोडक्ट इज मिस्ड. उनको पैक करने में एक प्रोडक्ट मिस हो गया. भाई तो आपकी तो एप्लीकेशन विल नॉट वर्क. राइट? यस और नो? एक चीज. ओके, सेकंड प्रॉब्लम. ओके, सेकंड प्रॉब्लम, यू हैव टू बी एक्सपर्ट, और असेंबलिंग का एक टाइम लगता है. राइट? असेंबल करने में टाइम लगता है. यस और नो? Yeah. राइट? अनदर प्रॉब्लम. ओके, तो व्हाट इज द बेटर सॉल्यूशन? सर इन सबको अच्छे से पैक कर देते हैं. ओके, गिव द कवर आल्सो, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. कवर के साथ हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इफ इट्स रनिंग इन माय एनवायरनमेंट, इट विल डेफिनेटली रन इन एनी अदर एनवायरनमेंट एज वेल. करेक्ट? प्रॉब्लम सॉल्व. क्यों भेजना है असेंबल्ड? ओके, पार्ट्स में क्यों भेजना है? पैक करके ही भेजते हैं. तो डॉकर हैज कम अप विद द आइडिया कि हम लोग पूरी एप्लीकेशन की बाइनरी, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी विल पैक इनटू वन बॉक्स दैट इज नोन एज इमेज. मेक सेंस? ओके, अब मैं इस, फ्रॉम दिस इमेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. ओके, if you move your house item, okay, from one place to another, okay, like this possible कर सकते हो. बट यार भाई, अरेंजमेंट करने के लिए फिर एक प्रॉब्लम है. राइट? सब किचन का आइटम कुछ मिस होगा, कुछ ब्रेक होंगी, थिंग्स विल बी मिस, थिंग्स विल बी ब्रेक. ओके, और कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगे. राइट? यस और नो? तो दिस इज अ प्रॉब्लम. ओके, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द डॉकर केम इनटू द पिक्चर. भाई एक ही बॉक्स में फुल एप्लीकेशन एक ही बॉक्स में रख दो. और अगर पार्ट्स हैं आपका किचन आइटम्स, तो किचन के आइटम डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल बॉक्स में रख दो. ओके, डाइनिंग रूम के आइटम डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में रख दो. एवरीथिंग इज ए डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस यू कैन क्रिएट. और अलग अलग इमेजेस को लेकर वी कैन गो इनटू द एनवायरनमेंट, और वहां पे जाके एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक कॉन्फ़िग फाइल होगी, कॉन्फ़िग मैक फाइल, जो कुबरनेटिस में होती है. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम, कॉन्फिग मैक फाइल. उसके अंदर लिख दो कि कौन सी चीज किससे आगे मर्ज होनी है, एंड जस्ट रन दिस थिंग. ओके, तो ये इस कॉन्फिग मैप से रीड करके सारी चीज ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए. गेटिंग माय पॉइंट? आइडिया समझ में आ रहा है? यस, नो? Like दिस induction. हैज बीन, और दिस हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ डॉकर. और ये अचीव कर सकते हैं हम डॉकर के थ्रू. ओके, अब अगर हम वी आर मूविंग इनटू द डॉकर, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? सर द कोड वाज रनिंग इन माय एनवायरनमेंट, डेव में हमेशा चल रहा था. ओके, और क्यूए और prod में नहीं चल रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू. अभी रियल टाइम प्रॉब्लम. ओके, जेंकिंस, कुछ लोगों का, हाउ मेनी पीपल आर हियर जिनका जेंकिंस अभी तक नहीं चला लोकल मशीन में? हाउ मेनी पीपल आर हियर? बोलो. मी. देवेंद्र, एक बंदे ने बोल दिया मी. क्यों नहीं चला भाई? बताओ. बाकी सबका चला, व्हाई नॉट यू?
मोहित आपका चला के नहीं चला, ये हाँ बताओ। चल गया सर मेरा। चल गया। क्या प्रॉब्लम थी, बोल दो, प्रॉब्लम क्या थी? सर वही मतलब साइज का कुछ इशू था सर। जावा की प्रॉब्लम थी, तो जावा की जावा, प्रॉब्लम थी हाँ ना, सॉरी, जावा इशू था। है ना, जावा, 17 राइट? was not compatible with that. करेक्ट, ओके। वी आर ऑलवेज सेलिंग कि आपको 21 चाहिए, आप मतलब समथिंग यू हैव समथिंग एल्स जावा, ओके, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम वाज हैपनिंग इनडायरेक्टली। भाई प्रॉब्लम क्या थी? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी, जेंकिंस की प्रॉब्लम नहीं थी। तो जेंकिन इज गेटिंग ब्लेम कि सर जेंकिन नहीं चल रहा। भाई जेंकिन की प्रॉब्लम नहीं है, योर एनवायरनमेंट इज नॉट कंफर्टेबल टू रन द जेंकिंस। राइट सर। इज मेक सेंस? ये प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। अब मैं मोहित की जगह अगर मैं मोहित को बोलूं, मोहित नो नीड टू वरी अबाउट द जावा, मैं खुद तुम्हें जावा भी दे देता हूँ, एक कंटेनर देता हूँ, ठीक है, एक इमेज देता हूँ, उसके अंदर जावा बाइनरी लाइब्रेरी कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू, यू जस्ट हैव टू रन इट। 99.99999% इट विल वर्क। गाइस एग्री? यस, यस नो? सर, यस सर। राइट, वही तो प्रॉब्लम हमने इन रियल टाइम में सॉल्व करी है, एंड दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डॉकर। चलो ठीक है, ओके, कूल, ओके। बस और क्या, लेट्स वेलकम टू द डॉकर। ओके, टू रन अ डॉकर आई नीड अ वर्चुअल मशीन। क्रिएट, भाई आ जाओ, वर्चुअल मशीन क्रिएट करो। एवरीवन कम अप, कम अप, कम अप, आई नीड अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम एवरीवन। यू आर माय प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स, आप पूरा उसको सब पता है कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाना है। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ओके। What should be the size? Any size is fine. Okay, सब size चलेंगे. Okay. I prefer. Let's go to the Google Cloud. Google Cloud पे चलते हैं. Okay. I hope you bookmarked it. आपने bookmark कर लिया होगा. नहीं करा है तो अब bookmark कर लो. console.cloud.google.com. Please. Fast. Okay. इसको bookmark कर लो. Okay. And yes, come to the compute engine VM instance step. Okay. Step में आ जाओ. Okay. As soon as you will come up here, you can able to see I don't have any VM. I have a zero VM at this moment. Okay. Now from now onwards, guys, we have to create every day. हमें machine रोज चाहिए. Correct? Right? Yes or no? We need यस a सर। machine every day. तो what I will prefer to you, create instance पे click करो. Okay. यहाँ पे नाम दे दो docker. Okay. DOCKR docker. Give the name docker. Configuration is fine. Okay. 2 CPU, 4 GB RAM is more than enough for our practicals. कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Project will get hang. Project के लिए we will create a bigger machine. अभी सब ठीक है. Okay. Operating system. Choose the operating system as a Ubuntu. Okay. Ubuntu. Okay. Here LTS, long-term support, and 24.4. 24.4 LTS. Okay. In place of 10 GB, take 30 GB. Take 30 GB. Select and allow the network. Guys, how many people reached till here? कितने लोग यहाँ तक पहुंच गए? Done. क्या बात? Me So sir. I have What a about others? question. Can we create the VM in AWS as well instead of GCP? भाई कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. Done. Okay. Now it's for every day your practice. You can copy the equivalent code और ये वाला कोड को कॉपी करके रख लो. फिर रोज हम लोग ये कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, 3 क्लिक भी नहीं करेंगे हम लोग. यू कैन जस्ट रन दिस कोड. ओके. इस कोड को अपने कहीं पे एक नोटपैड में कॉपी करके रख लो. ओके. Sir, नोटपैड. can we use the previous instance which we have created 2 days हाँ, before? अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं. वीएम ही तो चाहिए, वी नीड ए वीएम. Okay. सर एक No, sir, क्वेश्चन था. you told that every time we need the instance, so need to create. So that's why I'm asking. अरे तो हाँ, वीएम तो चाहिएगा. ओके, बिकॉज यू हैव टू इंस्टॉल द डॉकर. ओके. वीएम तो चाहिएगा. ओके. Okay. गुड. गाइस, आई एम कॉपिंग दिस कमांड. ओके, आप अपना कमांड, हाउ मेनी पीपल हैज कॉपीड द कमांड? कॉपी कर लिया कमांड? ओके, नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम कल से कॉपी करके रख लेना. ओके. कॉपी द कमांड, सब कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दो. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल कम टू द गूगल क्लाउड. सिर्फ होम पे आओगे, console.cloud.google.com. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट क्लाउड शेल. ओके. एक्टिवेट क्लाउड शेल पे क्लिक करोगे, वन टर्मिनल विल बी ओपन फॉर यू. एक टर्मिनल ओपन होगा विच इज यूज which is called as a cloud shell, or for making the connectivity between this VM, this black screen, to the Google Cloud. With the help of this cloud shell, it will be possible. Okay. After that, what we are going to do it, the black screen came, और वो जो command आपने copy किया था. Okay, the command you copied, copy and paste. Indirectly, this is सर a ये command to कहाँ से create. कॉपी किया आपने ये? Okay, good question. Okay, I'm coming back. I'm coming back. Okay, I'm going to the VM again.
I'm going here. I'm going to the compute engine. Okay, I'm going to the VM instance. Okay, VM instance. Okay. I was creating a machine, create instance. मैं instance बना रहा था. यहाँ पे ये question किसने पूछा था? Who asked this question? Manoj. Manoj. Okay. I given the name Manoj. Okay, मैंने मनोज नाम दे दिया. Sir, spelling. MNOJ. Manoj. Okay. और दोस्त यहाँ पे you have to do, guys, you have to give the name. Operating system change करना है. Okay, you have to change the operating system. मनोज यहाँ तक समझ में आया था? Yes, sir. Okay, 1 2 तक गए. Okay, यहाँ पे we have taken the LTS version again. Okay, LTS version 24.4 LTS. Okay, and इसका चार्ज मैंने 30 GB दे दिया था. Okay, and after that I just selected. ये मैं UI पे configuration कर networking allow the traffic. Guys, all clear? यहाँ तक सब ठीक है? सब ठीक है? And then after that कोई आंसर देगा how the code came? कैसे आया था code? Give the answer. Equivalent code. Equivalent Equivalent. code. Equivalent code. मनोज जी आंसर दे रहा है. In the मनोज जी bottom क्वेश्चन पूछ clear रहे हैं. मनोज जी give Actually, the answer. actually, I asked Environment before, code. but Shadab asked. So I put अच्छा my चलो ठीक है. ओके, Shadab asked. इक्विवेलेंट कोड पे क्लिक करना है और ये आपका कमांड आ गया. ओके, कॉपी द कमांड. इस कमांड को रख लो फॉर एवरीडे यूज. Okay, chalo. So how to get the equivalent code in AWS machine if you're मत creating करो it? मत करो. नहीं, आप तो पूरा करो. इक्विवेलेंट कोड होता है, वहां पे कमांड आता है. AWS EC2 का कमांड आता है. वहीं पे एक ऑप्शन है. Okay. when Okay. we in the AWS when we have launched the machine in that have the code. सेम भाई, जब यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है ना, वहां पे भी ऐसे ऑप्शन आता है. वहां पे भी इक्विवेलेंट कोड का ऑप्शन है. ठीक है. Okay, ji. Thank you. ठीक है, ये मैंने कॉपी करके रख दिया. एंड आई एम गाइस अगेन गोइंग बैक. मैंने उस कमांड को, उस शेल ओपन करके, एंड वी पेस्टेड द कमांड और एंटर. As soon as I pasted the command, okay, it will take 30 to 35 minutes, okay, 30 to 35 seconds, and my VM will be ready. Okay, let's wait for 35 seconds. Guys, everyone run the command, okay, and after this thing, send me the screenshot अगर आपका VM ready है. Send the screenshot in the WhatsApp group. Okay, send the So screenshot in the WhatsApp code group. okay. WhatsApp group में send the screenshot in WhatsApp group. Guys, So this the is my VM. एक बार अगर Ajit, डॉकर VM बनने के murmuring बाद sound is equivalent coming from code your के side, so I'm muting you. sir, once we create the virtual machine, if we want to check the equivalent code later on, can we do it? I am able to see it on the left hand side, but it is giving the JSON equivalent code. Can we use that to create it? भाई कमांड चाहिए. दिस इज indirectly a Linux, it is a Google Cloud command to create a PM. Okay, that's it. Okay, yes, अब यहाँ पे my machine is created, and machine created, तो something came as a result. Okay, output. Docker is the machine name. Yes, this is the location, this is the size, and this is the internal or external IP of the machine, and my machine is up and running. So many students are sending the So screenshot. what is देखते हैं this क्या error? है. हाँ, error What is नहीं है this दोस्त, error we error. are getting in the notepad? Error आ रहा है. Error. Already Error Okay, message. some policies are already exist. Policies already exist. उसकी कोई टेंशन नहीं है. Okay. ठीक है. VM is running. अपने को VM running करनी है. ठीक है? चलो, let me see. कुछ स्टूडेंट देंगे. कुछ तो भेज रहे हैं भाई. अच्छा, मैंने ही भेजा था. ओके. आई एम जस्ट सेइंग. ओके, कुछ स्टूडेंट के VM बने. हाँ भाई, बन गए भाई. बहुत सारों के बन गए. कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं, सेम आता है. वो ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है. ठीक है. प्रतीक, ठीक है भाई, VM बन गया. सब लोगों ने CLI से बनाया यार. क्या बात है. गुड. भैया वो फ्रेशर तो नहीं रहे आप. ठीक है. Good. Okay. Cool. Okay. Nice. Okay. After VM बन गए. Super. Okay. If the VM is created, what I'm doing it. If the VM is created, इसको close कर सकते हो. You can close this terminal. Again go into your place. कहाँ पे VM है. Compute engine, VM instance, and you will able to see the VM is up and running. Okay. Yes. Now, how to connect to this VM? Raise your hand and give me the complete answer. Complete answer though. Yes, Sudeshna, go ahead. How to connect to this VM? Give me the complete answer. We can click on SSH and we can connect it. So it will exchange the private and the public key, and it will get connected. एक पॉइंट फिर भी मिस हो गया. एक वर्ड मिस हो गया है. Keys are getting transferred. Authorization, authentication will happen, and with the port And the number. Port number 22. Port number 22. 22, it gets will be connected to the port number VM. The 20. port number 22, we will be landed into the machine. Cool. And आ गए भाई मशीन के अंदर आ गए. ठीक है. Cool. Now what I'm doing it, I'm just typing sudo -i. Okay, and I have connected to the machine. That's it. Okay, machine से connected हुआ और I have become the root user. Now, yes, how to install Docker? पहले तो Docker का वर्जन चेक करना है. Which version of Docker I have?
So I'm just typing the command docker -v, and I get to know why Docker to available nahi. Docker is not available in my machine. Okay. Now, with the help of this command, Linux is a beauty. He will give the command if you want to install apt install docker.io, and Docker will be installed. Correct? Yes, no? Yes, no, yes, no. Okay. As a Yes. best practice, our previous experience or knowledge says you have to run the apt-get update. Okay. ये command run करोगे first, so that all the packages will be get updated and you can install the Docker. ये हो गया एक बिल्कुल junior engineer approach. Correct? Yes, no? एक बिल्कुल प्योर जूनियर इंजीनियर अप्रोच. ओके. थोड़ा सा जूनियर को सीनियर बनाते हैं. ओके. ये सीनियर इंजीनियर. ओके. और सीनियर इंजीनियर विल डू, इन दोनों को कमांड को मर्ज Combine करके the एक two. कमांड बना देगा. कैसे करेगा भाई? इन दोनों को एक सिंगल करेंगे. बोलो कैसे होगा? ampersand And लगा लगा देंगे. ampersand. n%. और यहाँ पे आपने -y. हियर last मैंने में एक और कमांड दिया था, sudo -i. और यहाँ पे भी हमने लिख दिया sudo apt-get update, sudo apt-get update. और यहाँ पे लिख दिया -y, so that it will not ask the prompt and our Docker will be installed. So one more Yes or no? ampersand will come. One more. Ampersand sign. ठीक है. No, one is also equal. अपडेट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. अपडेट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? UPDAT अपडेट. ठीक है. We can use also M libraries, right? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो. Libraries we are also using now instead of apt. That is on the machine depend of Linux. If you are using फिर Debian, से then you are using yum. Oh, Ubuntu for है और Debian Red Hat flavor we है. are फिर also से using Ubuntu yum. और Debian flavor. Okay. Then you have to use apt. और if you have a CentOS flavor, अगर CentOS है तो apt की जगह हो जाएगा yum. ठीक है. apt की जगह yum. Okay. बस. Understood? अब देखो एक प्रॉब्लम आई गाइस. सर आई डोंट नो माय फ्लेवर. ओके. ये भी तो एक प्रॉब्लम आ सकती है. राइट? यस नो. ठीक है. तो you have to be aware about it. Otherwise, ये हो गई जूनियर सीनियर इंजीनियर. ओके. आई हैव another approach. मेरे पास एक और अप्रोच. बोलो क्या होनी चाहिए? सर प्रॉस में जाके चेक कर सकते हैं बस. क्या कर सकते हैं? प्रॉप etc प्रोसेस रिपोजिटरी से हम कर सकते हैं सर. चेक कर सकते हैं. There is a command to check the flavor and everything on the Linux. करेक्ट करेक्ट. हम लोग फ्लेवर चेक कर सकते हैं. uname -a से हमें फ्लेवर मिल जाएगा. ओके. और ये scat etc release OS से भी हमें मिल जाएगा. ठीक है. अब यार यहाँ पे एक मिनट. अब तो मुझे तुम्हें और अच्छा पैक बताना है. ठीक है. तो व्हाट आई एम डूइंग इट, ये अप्रोच तो एवरीवन नोस. करेक्ट? यस और नो? एवरीवन नोस. ओके. सबको पता है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, मैं कुछ डिफरेंट लेके जा रहा हूँ. आई एम गोइंग अगेन बैक टू द गूगल. गूगल पे वापस जा रहा हूँ. ओके. एंड आई एम जस्ट टाइपिंग हियर गेट गेट. ओके. जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया गेट डॉकर. ओके. एक फर्स्ट लिंक केम get.docker. ही हैज गिवन द वन स्क्रिप्ट. उसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी है. करेक्ट? ओके. हमें पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना है? नहीं, हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं रीड करना है. ओके. इन द स्क्रिप्ट फर्स्ट ये सब कमेंटेड है. ओके. यस, देयर आर सम कमांड्स. हियर है कुछ कमांड्स. आई वांट समवन टू एक्सप्लेन मी दिस कमांड. ओके. व्हाट एग्जैक्टली दिस कमांड? 5 कमांड्स आर देयर जो मैंने लिए हैं. ओके. हु विल एक्सप्लेन मी दिस कमांड? फर्स्ट कमांड सेज, बोलो. हाँ राजीव, गो अहेड. Install the Docker राजीव भाई, with the इंटरव्यू में current. सिलेक्ट होना है कि नहीं होना है? इफ यू वांट टू सिलेक्ट, गिव द कंप्लीट आंसर. ओके. सी आई नो आपको आंसर पता है इसलिए आप हाथ अप कर रहे हो, बट सी इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय अदर्स आल्सो. मुझे भी तो समझ में आना चाहिए व्हाट यू स्पीक. It's a curl command to get the Docker, install the Actually, download the It will Docker. download the Docker. it will go to the Basically, get.docker.com We are website. we are And first wait, targeting or hitting mute, this. mute, 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 wait. राजीव को बोलिए. राजीव को आज सिखाना है हमें. राजीव भाई बोलिए. It's basically a curl command to download the Docker. फिर गलत. ओके. डॉकर डाउनलोड नहीं होगा. ओके. अब सुनो वैशाली, गो इट. हाँ, करेक्ट आंसर. So basically, it is hitting to that https getdocker.com to install the docker.sh script. So it is downloading that script. It is
what exactly it is. With the help of curl command, we are going into this website, and one file will be downloaded. वो जो इस code के अंदर लिखा है in this website, whatever is written, it will be written into this file. बस file के अंदर लिखा जाएगा. script के अंदर Docker लिखा install होगा. नहीं होगा, Docker download भी नहीं होगा. The code will be downloaded into this script. Rajiv, understood? Correct. Yes. है ना? ठीक है, cool. After that, what will happen with this command? We are This using command the We'll cat command output the to verify the shelf. content of that shell script. If you want to see the content, we can able to see. So what I'm doing it, I'm just taking this command को ले रहा हूँ, run कर रहा हूँ अपने environment में, okay, and I run it. बस ये स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गई, बस दैट्स इट. install/docker.sh ये स्क्रिप्ट डाउनलोड हो, ठीक है. With the cat command, I can read it, correct. With this command, I can dry run and check. Okay, dry run करके check कर सकता हूँ. It will be good when you're going and giving the interviews. Before running any of the script, the best practice or good practice is you can write the -dry-run, okay, command, so that we can check the comfortability. This script, what exactly it is supposed to go and do. Okay, तो हम लोग उसकी comfortability check कर सकते हैं with the help of this command. ठीक है. What will happen with this command? इससे क्या होगा? We'll install the Docker. Install the content of the sh. File run होगा. Try to run that. It's a shell script to install the Docker. The shell script Shell should be script run. will be executed. जो shell script है, जो shell script है will be get executed. ठीक है, मैं shell script को लिया और I just executed with the sh install.sh. Sudo, I'm already a root user, so sudo is not required. Okay, so I'm just deleting the sudo. Okay, sh command से sh and script name, and I just press enter. Okay, and it is installing the script. Okay, वो script में जो भी लिखा है, it is executing it. At the result, I will get a Docker. Okay, so guys, I'm giving you this two command. आपको ये दो command को execute करना है. Okay, please execute this two command in your environment. Okay, आपके VM के अंदर. एक सेकंड. Okay, guys, take these two commands. ये दो command को ले लो. Okay, sudo -i रखना. Okay, first sudo -i and then run this two. sudo का मतलब क्या होता है यहाँ पर शेल स्क्रिप्टिंग में? Super का user मतलब to होता है root user. sudo का मतलब होता है root super user. user to. Extra Super user. privileges will be provided to you to install any of the application. ओके, तो ये वन टाइम चला दिया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइम नहीं लिखने की जरूरत है फिर तो. One time. Okay. Shut up. If you haven't attended the Linux, please Linux के videos देखो. Okay? Yes, So that sir, yes, you will get to know this thing. Okay? Okay, sir. Thank you. है ना? Sudo तो Thank you. समझ में आ रहा है Okay? super user, Now, but why use the yes, sh? tell me which version of Docker. कौन सा version Docker का install हुआ है? Tell me. Which version of Docker came? 29.1.3. बस बढ़िया, यही तो चाहिए था. Correct. POCK Docker -v. Okay? And 29.4.1 4.1. Perfect. Okay, भाई डॉकर इंस्टॉल हो गया. That's it. हाई इन प्रोग्रेस. ठीक है गौरव भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा. परफेक्ट. भाई डॉकर इंस्टॉल हो गया है. नाउ आई वांट टू चेक मेरा डॉकर रन हो रहा है नहीं हो रहा. व्हाट इज द फर्स्ट कमांड और हाउ यू विल चेक इट डॉकर इज रनिंग और नॉट? Using Docker system systemctl Docker status. PS. Docker ps. Okay, you can run the docker ps command and I get to know that at this point none of the process is running. ठीक है. System If you want to check, status if you Docker. want, हाँ करेक्ट, वो भी कमांड सही है. ओके, वी कैन चेक द डॉकर सर्विसेज, डेमन सर्विसेज आल्सो, systemctl docker status command and we can able to check it. Okay, चलो ये कमांड रन करके देख लेते हैं. ओके, आई एम रनिंग दिस कमांड. systemctl. ओके, चैट में है गाइस. ओके, यू कैन चेक इनटू द चैट. ओके, systemctl status docker. ओके, एंड यस आई गेट टू नो docker is running. ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. Cool. My Docker is running. Okay. Sir, have you run all 4 commands written in Notepad? मैंने सिर्फ दो ही रन करे. मैंने दो ही रन करे. Okay. Okay, sir. रीड करने ही नहीं था. We don't want to read it. हमें ट्राई रन करने ही नहीं था, तो हमने डायरेक्टली ये दो कमांड रन करे. That's it. Okay. Can we continue? Continue करें? Yes, sir. Yes. Everyone? Yeah. Thank you. भाई अभी हमारा डॉकर इंस्टॉल हुआ है. 2-3 कमांड्स आज कम से कम 2-3 कमांड 2-3 कमांड सीखे. ओके, dock docker ps. If you want to check the running processes are available or not, or any running container is available with the docker ps command, it will be visible. Okay, docker ps -a
will say the archive. Okay, or all the commands will be visible into this place. All the running containers or exited containers also will be visible into this place. Docker images images command, I'm running it, and I will get to know any images available in my environment. Okay, you can check run 3 commands. ये तीनों command आप अपने environment में run कर लो. Okay, just run it. सर Done. ये So just type सिस्टम done into the सीटीएल checkbox. डॉकर किस लिए होगा? What Vijay? What you are telling? सिस्टम सीटीएल डॉकर स्टेटस डॉकर. Status of the Docker. Okay, Docker status daemon is running on now. ओके. ये 3 रन कर लेते. Okay, now guys, मेरी requirement है, not requirement. Okay, I put on the download. मैंने download पे रखा था वो एक क्या कहते हैं अपना Ubuntu image download करने में. Correct? This is the image was downloaded VDI. Okay, इसका size देख लेते हैं. Just I am checking the size. मैंने size check करा properties पे जाकर. Okay, and it is coming as 2.43 GB as a zip file. Correct? Yes, no? इसको अनजिप करूंगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है. cool. ओके, ये तो था वर्चुअल मशीन में. अब यहाँ पे ये भी ubuntu था. हियर ऑल्सो आई एम टेकिंग द वन. अब मुझे एक ubuntu की इमेज डाउनलोड करना है. ओके, सो आई एम रनिंग द कमांड docker pull ubuntu ubunt. ओके, आई जस्ट रन द कमांड docker pull ubuntu. टाइप करो, आप लोग खुद टाइप करो. टाइप इट बाय ओन. टाइप करो. ओके, टाइप इट बाय ओन. I'm audible, sir. डॉकर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने कमांड रन किया था डॉकर पुल Sir, I'm audible. जस्ट रन दिस कमांड. So, what is the Sir, I'm purpose to run this full Ubuntu? To fetch the image. डॉकर पुल ubuntu चेक करो. ओके, डाउनलोड इट. Hello. गाइस एवरीवन डाउनलोडेड? सर गिव मी द कमांड. आई विल नॉट गिव द कमांड. टाइप करना पड़ेगा आपको. टाइप इट बाय ओन, नहीं तो कॉपी पेस्ट करोगे. ओके, डाउनलोड हो गई. अब रन द कमांड डॉकर इमेजेस. ओके, फिर से कमांड रन करो डॉकर इमेजेस एंड लेट मी नो द साइज ऑफ ubuntu. मुझे ubuntu का साइज ते सूर्यसंजय गाडीस किल्ली कुठे आहे? Sir, it is 9.49 KB. 31.7 MB. 119. ओके, चलो मैं चेक कर रहा हूँ. ओके, आई एम रनिंग द डॉकर इमेजेस कमांड. 119 MB. क्या बात है. Yes. For me, it's 119 MB, sir. करेक्ट, सबका सेम ही आएगा. ubunt ubuntu. ओके, इमेज. ओके भाई, वो जो अभी पहले थी 2.1 GB की, वो भी तो इमेज ही थी. करेक्ट? यस नो? ये भी तो इमेज ही थी. यस नो? 2.5 GB की. But So, this yes, is no? lightweight. Sir, on the top of the same OS, we are downloading the Ubuntu image again. Why? सिद्धार्थ, थोड़ा सा 2 मिनट है ना. Cool, Okay, मैं okay. लेता हूँ. ओके, इस वी हैव डाउनलोड दिस ubuntu. एक इमेज हमने डाउनलोड करी और ये भी ubuntu ही था. एनी डिफरेंस इन दिस ubuntu? दोनों ubuntu ही तो हैं. करेक्ट? यस और नो? The Yes. size difference. You Size. understood the difference in size? 2.5 GB to 119 GB. Yes. Why this size difference came? कैसे आया? Because we download from a script and instructions of Wrong answer. Definitely wrong answer. Pure wrong answer. भाई difference क्यों आया size का? कॉन्फ़िगर होगा सर वो वाला सर. 10 rise to 4. Because it's इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होंगे सर. It's Because a minimal OS. I think it आप is a कहते हो ना आप package. लोग सी. package. one second. You are telling ना कि सर we are going to the interview. हम लोग इंटरव्यू देते हैं, हम लोग रिजेक्ट होते हैं, राइट? Why रिजेक्ट होते हो? क्योंकि आप सिर्फ आंसर दे के आते हो. करेक्ट और नॉट करेक्ट का तो बात ही अलग है. गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? yes. लिसन द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन तो सुनो. ओके, क्वेश्चन तो सुनो. ओके ओके, सी व्हाट व्हाई द डिफरेंस. ओके, 2.5 GB और 119 GB है तो दोनों ubuntu. ओके, फुल कंफर्टेबिलिटी जो उसमें ubuntu में है वो भी यहाँ पर भी है. बट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? जस्ट थिंक इट. That is we are pulling Docker image here. That's why I think. रेज योर हैंड गाइस, रेज योर हैंड और उसके बाद आंसर दो. रेज योर हैंड. Mayuraj, go ahead. What is the reason? So basically, which image we downloading right now, it is lightweighted and it is does not contain any dependencies. Means Wrong answer. Incomplete answer. Vinod, go ahead. Aman, उसके बाद. It is Docker image from downloading Docker Hub. It is lightweighted. Docker ने बनाई lightweighted है. Correct. Yes, no, it's a image. और वो lightweighted develop has been like that कि it will be a lightweighted. Compatibility will be same. Okay. एक biggest difference which we downloaded, there may be chance कि उसमें GUI also available. Okay. Hello. But here there is no GUI available.
ओके, कंफर्टेबिलिटी वाइज दोनों सेम है, बट यस, इमेजेस ऑफ लाइट वेट सिंपल बिकॉज वी आर टेकिंग फ्रॉम द टॉप. बस There इतना are ही no मेन डिफरेंस near the background services. There are no drivers. है. ये भी कह सकते हैं. ओके, यू कैन से दिस आल्सो. ओके, गुड. नाउ ubuntu आ गई. नाउ लेट्स नाउ आई वांट टू क्रिएट ए वेरी फर्स्ट कंटेनर. ओके, मैं एक सबसे पहला कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ. ओके, व्हाट आई एम डूइंग इट, मैं कंटेनर बना रहा हूँ. एंड एज एवरीवन, हर यूट्यूब वीडियो पर यहाँ तक आप लोग देखते ही हो कि डॉकर रन हेलो वर्ल्ड कमांड एक रन. ओके, DOCK डॉकर रन HELLO हेलो हाइफन WRLD, हाइफन नहीं लगा. ओके, WORLD. ओके, मैंने रन. ठीक, इंटर मारा. ये कुछ तो एरर आ गया. सम एरर के गाइस, रीड द एरर, जस्ट रीड द एरर, रीड द एरर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Sir, image is not Not available. able to find the You image need to add the locally. Image we are We not need finding. to download the image of Hello World. It is telling unable to find the image locally. इस नाम की कोई image available नहीं है. Okay, First pull the I am also checking it. अरे रुको, I am also checking it. He is correct. This point is correct. Okay, unable to find the means सबसे पहले he will check in the local machine कि that image is available or not. Okay, नहीं मिली. Second, he went to pull the image. फिर Docker Hub पे गया. Okay, he went to the Docker Hub और he tried to check this name. Okay, and at the end it is telling access denied for this, मतलब available नहीं है. Okay, does not exist or may not required or may require a docker login. But he want to say भाई I haven't get this name. Okay, if it's a private you have to log in it, then you can get the private images. Getting my point? Yes, no? Okay, Yes. indirectly that image is not available in local machine and it is trying to pull into the docker. So how these all things are happening? Chalo, these all things are happening with the help of this flow. Okay, we all like flow. This is the flow. This is the Docker architecture. Okay, just give me 5 more minutes. Let me explain you the architecture. Okay. It is divided into 3 parts. इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए. Okay, it is divided into 3 parts. First part is client. Okay, client और टर्मिनल, हम इसे टर्मिनल भी कहते हैं. ओके, क्लाइंट और टर्मिनल व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जहाँ पे हम लोग कमांड्स को रन करते हैं और कमांड्स के आउटपुट पढ़ते हैं. वही ब्लैक स्क्रीन, अपनी ब्लैक स्क्रीन. अंडरस्टूड? Correct, sir. In the middle, in the middleware, where the Docker is installed, Docker host, we will call as a Docker host. Docker की कुछ services are running, or indirectly, or in a better word, we can say Docker daemon. The background process is running. Make sense? Okay, which will help. We will understand. It will understand the command and it will perform that. Okay. Docker images command अगर हम run कर रहे हैं तो whatever images are available, it will be visible into this. Docker PS command, if you will run, any running containers are visible into that place. Correct? Right? Or Docker Hub is a place. Docker Hub is a place where all the registries or images are saved. Okay, एक बार गूगल पे जाओ या ChatGPT में जाओ. How many total images are available in Docker Hub? Go and give me the answer. 1,000 plus. How many total images are available in Docker Hub? Google या ChatGPT? Answer. Number of images. भाई गूगल या ChatGPT क्या बोल रहा है वो बोलो. 14 million. 40 million. 14 million containers. 14 million. Okay, कितने 14 millions? 14 millions. Yes. More than Millions. 14 More than million. 14 million plus images are available. Okay, 14 million images are available मतलब मैं बोलूँ आपका 95% रिक्वायरमेंट तो रेडीमेड बना हुआ है. करेक्ट? Yes or no? Guys, Yes. getting my point? आप जो भी सोचोगे Yeah. कि आई नीड दिस एप्लीकेशन, 95% चांसेस दैट ऑल एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल. आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और रन करना है और यूज करना है. मेक सेंस? यस, नो? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो अब हम लोग एक्सेप्शनली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वी आर इन 5%, हमारी रिक्वायरमेंट की इमेज नहीं है तो हम इसे डेवलप भी करेंगे एज ए डेवलपर. ओके, इन द टुमारो क्लास. ओके, अब यहाँ पे आई एम जस्ट रनिंग वन कमांड. मैंने एक कमांड रन किया था, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड. ओके, चलो आई एम जस्ट रनिंग दिस कमांड. ओके, डॉकर रन हेलो हाइफन वर्ल्ड. अब सर ये आपको वन ऑफ द स्टूडेंट विल आस्क मी सर हाउ यू गेट टू नो दिस हाइफन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये. ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग इनटू दिस टैब. मैं यहाँ पे जाके जा रहा हूँ जीओसी के डॉकर. ओके, आई एम गोइंग Sir, हियर. what is this? हाँ, ये मेरे लैपटॉप का कुछ टर्बो है. ओके, टर्बो बूस्ट के लिए होता है. ठीक है, मैंने बंद कर दिया, अदरवाइज आई विल शो यू.
DOC Docker Docker Hub पे जा रहा हूँ. HUB. I'm going to the Docker Hub, and here I'm coming here. This is the place where all the images are. I'm trying to search into this place. HELLO hello hyphen WRLD मैंने यहाँ पे सर्च किया, एंड आई गेट टू नो कुछ एक ऑफिशियल डॉकर इमेज के. ये यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग दिख रहा है, कुछ ब्लू टिक दिख रहे हैं, सम ऑफिशियल इमेजेस. इज व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ कोई बंदा बता पाएगा इन चारों में क्या डिफरेंस है? These are the If I say organization. Organization, auto test ये है strategy, ऑफिशियली, दिस इमेज इज ऑफिशियली प्रोवाइड बाय डॉकर. ओके, दिस इज community was. प्रोवाइडेड बाय रैंचर. ओके, और ये जो है ये किसी दूसरी कंपनी ने बनाई है. दिस इज प्रोवाइडेड बाय एटलसन. ओके, इसका कुछ समझ में, ये स्पॉन्सर्ड, सी ये वेरीफाइड है. ब्लू टिक इज कमिंग मींस वेरीफाइड. दिस इज स्पॉन्सर्ड. ओके, दिस इज ऑफिशियल इमेज बाय डॉकर हब. ओके, और दिस इज नॉर्मल यूजर. राइट, अंडरस्टूड, समझ में आया? तो अब इसमें से हमारी बेस्ड ऑन नीड, भाई फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग जाएंगे डॉकर वेरीफाइड इमेजेस. ओके, सेकंड प्रेफरेंस जो भी वेरीफाइड इमेज होगी. अंडरस्टूड, यस नो? इसको कभी रियल टाइम में डोंट डाउनलोड इट इन द रियल टाइम इन्वायरमेंट. मेक सेंस? यस और नो? ओके, सर तो हम लोग डिफरेंस यहाँ पे क्या गए. होगा? भाई ये अनवेरीफाइड है ना, ये पता नहीं किसकी है. तुम कौन नहीं है तो पता इसको नहीं, मेरा जैसे सीक्रेट पता नहीं क्या दे देगा. But successfully 10 But it million is people downloaded download 10 की million हुई. plus times. अरे So हाँ, she's तो at करिए पर 10 नहीं करना million है ना. plus. अरे हाँ, हुई है तो नहीं करना है. नहीं करना है. ओके, Okay, sir. You यू डोंट cannot हैव use टू. this in production environments. हाँ, करेक्ट, यू डोंट हैव टू यूज इन योर रियल टाइम, और यू डोंट हैव टू यूज इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. सिंपल आंसर. ओके, करेक्ट. ओके, हमें क्या करना है? Sir, हमें ये this करना hello world is a sample program. है. अभी देखो ना, अभी Is it देखो, a सी sample program to test? आई एम जस्ट डूइंग इट. मैं इसके अंदर गया, आई वेंट इनटू दिस. Okay. ओके, एंड हियर एक कमांड आ रहा है. आई एम गोइंग हियर, कमांड आया डॉकर रन हेल्प. बस मैंने यहाँ से ले लिया है. ओके, मैं पूरा कमांड कॉपी कर रहा हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस कमांड और इस कमांड में क्या डिफरेंस है. ओके, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड और इस कमांड में क्या डिफरेंस है. ये तो हो गया बेस इमेज, इट विल बी पुल द इमेज. ओके, और इसके अंदर व्हाट एग्जैक्टली इट इज रिटन, ये क्या है? It's a tag. Sir version type. So tag. कोई It's a वर्जन tag स्पेसिफाई or it's कर a रहे हैं? version. Version. It's a tag or it's a version. Okay. कई बार tag is in the name Tag also. also. Sometimes tag is in the number also. दोनों करेक्ट है. ठीक है, हर कंपनी का अलग अलग. Okay, तो both are fine. Okay, but now at this point I am running this command. Okay? Docker pull से क्या होगा? It will just download the image. Correct? Yes or no? It will just download the image. If I run the command docker run, what will happen? Guys, कोई आंसर देगा? Run से क्या होगा? Run हो It जाएगा. It will will It pull and download. run. Will create a It will pull and run. Pull and run. Container it will will create a If Run the container. I container. run, if Page I will run the become the command container. pull, it running will pull. instance of the image will be created, which we call as the container. It will Right. pull the Okay. image Pull first, plus then it will run the container. Pull, it will pull plus it will run. Okay. Indirectly, what happened? Image will become container. करेक्ट, इमेज कंटेनर बन जाएगा. दैट्स इट, बस इतना सही होगा. ठीक है, चलो अब मैं इसको रन कर. ओके, डॉकर रन हेलो. आई एम जस्ट रनिंग इन माय स्क्रीन. ओके, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब गाइस इस आर्किटेक्चर को देखना. आई एम रनिंग दिस कमांड डॉकर रन हेलो वर्ल्ड. ओके, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड. ओके, मैं सिर्फ ये वाला कमांड अभी रन, एंड आई एम प्रेसिंग एंटर. मैंने जैसे ही प्रेस करा, unable to find the image, सबसे फर्स्ट पॉइंट केम. कहाँ गया? unable to find the image locally. It is not able to find locally, मतलब docker run command ने with the help of daemon it is check here it is available or not. Guys, getting my point? Yes, no? Okay, see my blue line. Okay, it is trying with the help of docker daemon, it is trying to understand that image is available or not. It is not able to find. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. नहीं find कर पाए, then he is pulling the image from the library. Okay, ठीक है. The docker client connected to the docker daemon. First point कह रहा है docker client, ये जो docker client है connected to the docker daemon. एग्री. उसके बाद सेकंड पॉइंट, द डॉकर डेमन पुल द हेलो वर्ल्ड इमेज फ्रॉम द डॉकर. बहुत अच्छी बात है. डॉकर डेमन पुल द इमेज, इट वाज नॉट एबल टू फाइंड हियर, सो ही वेंट इनटू द डॉकर हब. ही वेंट इनटू द डॉकर हब, ही फाइंड द पर्टिकुलर इमेज, ही फाइंड द पर्टिकुलर इमेज एंड ही डाउनलोडेड फॉर अस. गाइस, मेरी बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2, जस्ट टाइप 2 इनटू द चैट बॉक्स अगर 1 और 2 दोनों समझ में आए तो. Yes, sir. 2 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 2. Okay, and after that the third point says
the Docker daemon created a new container from the image. Docker daemon ने जो इमेज आपने पुल करी, द इमेज हैज बीन पुल्ड, ओके, यहाँ पे एक इमेज आई, उससे एक कंटेनर बनाया, मतलब ये अगेन बैक हियर, ओके, एंड कंटेनर हैज बीन क्रिएटेड, ओके, कूल. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है द डॉकर डेमन स्ट्रीम द आउटपुट टू द डॉकर क्लाइंट विच यू आर रीडिंग इन योर टर्मिनल. ये इसके बाद कंटेनर रन हो गया, यहाँ पे रन हो गया है, ओके, द कंटेनर इमेज से कंटेनर रन हो गया, और ही गिवन द आउटपुट टू द स्केल, और यही आप रीड कर रहे हो अभी. यू अंडरस्टूड द फ्लो, पूरा फ्लो समझ में आया? यस नो, यस नो, कैन आई रिपीट? यू, हु विल रिपीट? कौन मेरी हेल्प करेगा? हु विल रिपीट? बोलो भाई, कौन रिपीट करेगा? हु विल रिपीट? हु विल रिपीट? सैम या वैशाली? वैशाली, योर वॉइस ऑलवेज कमिंग क्लियर. आप भाई बोलिए, बोलिए. ओके वैशाली, व्हाट इज हैपनिंग विद द फर्स्ट लाइन? बोलिए क्या होता है? So basically, the Docker client contact the Docker daemon to pull the image. डॉकर क्लाइंट, ओके, वन सेकेंड, उसको इस येलो कलर में लेते हैं. डॉकर क्लाइंट, ये जो यहाँ पे लिखा है डॉकर क्लाइंट कनेक्टेड टू द डॉकर डेमन, ठीक है. उसके बाद Yeah. The Docker daemon pulled the hello world image from the Docker hub because it couldn't find in the local repository. बढ़िया. It is trying to check into the local. He was not able to find. So this Docker daemon went to the Docker hub. Okay. और उसने यहाँ पे इमेज को पुल कर. बहुत बढ़िया. Yeah. Guys, you are able to type 2. If type 2 अगर समझ में आया तो दोनों पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट समझ में आया एवरीवन? ठीक है वैशाली. Then what is the third point? Then using that image, the new container has been created. करेक्ट. फ्रॉम दिस इमेज, जो इमेज डाउनलोड हुई उससे कंटेनर क्रिएट हो गया. बहुत बढ़िया. ठीक है. Then Docker daemon streamed out the output to the Docker CLI, which we are seeing on the terminal. करेक्ट. कंटेनर बन गया. कंटेनर बन गया तो कंटेनर के अंदर लिखा था कि ये सब आउटपुट जाके दिखा दो. ओके, तो ही शोड इनटू दैट पूरी Terminal. एप्लीकेशन का फ्लो, गाइस, एंड इट इज विजिबल इनटू द टर्मिनल. ओके, और क्लाइंट के टर्मिनल. गाइस ये समझ में आया? यू अंडरस्टूड द फ्लो? Yes, sir. ओके. इफ वी रन एनी कमांड, कोई सा भी कमांड, आप जो हमको कल इन द टुमारो क्लास वी आर गोइंग टू रन लॉट ऑफ कमांड्स, भाई बेस तो यही होगा, इसी फ्लो में चलेंगे. ओके, चाहे वो प्लगइन हो, एक्सटेंशन हो, बिल्ड हो, पुल हो, कुछ भी हो, बेस्ड ऑन द नीड इट विल परफॉर्म द एक्टिविटी. मेक सेंस? यस और नो? चलो अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है. ओके, देयर इज इंटरव्यू क्वेश्चन. ये सब होने में कितना टाइम लगा है? हाउ मच टाइम इट टुक? 20-30 seconds. 15 milliseconds. Maybe some milliseconds. भाई ऐसे आंसर नहीं देना है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. ओके, इंटरव्यू में थोड़ी ना बोलते 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड. इंटरव्यू बोलेगा प्रूव करो. हाँ भाई प्रूव करिए. 20-30 seconds. भाई प्रूव करना है. आंसर तो ठीक है, 20-30 सेकंड प्रूव करना है. So for that we can run. टर्मिनल में लिखा होगा ना सर? There is ईमेल में लिखा also होगा. कहाँ, कौन से ईमेल भाई? Run this ईमेल command. थोड़ी ना. should check the log file. बहुत Sir, बढ़िया. in microseconds. अरे कितना माइक्रो सेकंड? सब में आंसर तो सब करेक्ट है, बस प्रूव करना है. तो प्रूव Sir, करना है. if यू हैव the टू प्रूव output दैट. we can see that, use sir. Time before It is command. 0.331 Need to add seconds. time after our Docker So command. this is a command. Sir, we'll use the time command before the Docker run command. आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, इफ यू वांट टू चेक हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, जस्ट रन द कमांड टाइम, ओके, इन फ्रंट ऑफ दैट कमांड, ओके, और एंटर मारो. ओके, it is telling this time it took 0.591 milliseconds. Understood? That's it. Another interview question. If it's a container, okay, पहले तो चेक करते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा. doc के docker ps, okay, ये तो रन नहीं, इट इज नॉट रनिंग. करेक्ट? ये सुनो, कहाँ गया? अभी तो रन किया था. वेर इट वेंट? Sir, Docker PS-A. Must be running in the background. It exists. बैकग्राउंड में. बहुत Sir, बढ़िया, It बहुत गलत exists. आंसर है. एग्जिट Sir, हो गया ना exit सर? हो गया sir. एग्जिट हो गया इसलिए वो क्यों exit? स्टॉप क्यों हो exit गया. हो गया? Destination में दिख गया See, sir. PS will show guys, the wait, only wait, wait. running Why it's container and exited? क्यों exit हो गया दोस्त? ये exit क्यों हो गया? Why it exited? The function which is Yes. written on that is It's completed. a problem, guys. Do you feel it's a problem? इंटरेक्टिव मोड नहीं है Yes, sir. इसीलिए हाइफन So, आईटी Detach mode Entire में mode run पे रन नहीं किया गया था. Detach mode. no, it has okay, guys, it has been exited because his work is complete. इसका काम complete हो गया, इसलिए इसको exit हो गया. Okay, unnecessary. What is the sense? अगर काम if the work is completed, we don't have to rerun it. We don't have to run it continuously, right? This is the feature. This is not a problem. This is the feature into the Docker. Okay, cool. अब यहाँ पे मैं एक और इमेज है अपने पास Docker. अभी हमने डाउनलोड करी थी Docker images, images. Okay.
ठीक है, ये एक उबंटू है और एक हेलो वर्ल्ड है। एक और मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सेंटोस। गाइस आई विल नॉट डू इट, आपको खुद करना है। सेंटोस डाउनलोड करें, फाइंड आउट द कमांड, अपने आप से कमांड ढूंढिए, डाउनलोड इट एंड गिव मी द साइज ऑफ द सेंटोस इमेज। इसमें थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो गाइस। ओके, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। ओके, प्लीज डाउनलोड द सेंटोस इमेज, नाम ढूंढो उसका, सेंटोस का क्या है। ओके, गो टू द डॉकर हब, चैट जीपीटी, जहां पे जाना है, फाइंड द नेम एंड गिव मी द साइज। साइज मुझे स्क्रीनशॉट में चाहिए। ओके, साइज आई नीड इन स्क्रीनशॉट। ओके, इन द व्हाट्सएप ग्रुप भेजिए। आई एम जस्ट चेकिंग, आ रहा है किसी का तो कुछ आया था, क्या था, उबंटू। उबंटू का साइज आपने भेजा था। यस, आई नीड अ साइज ऑफ CentOS image. Well, CentOS is not being maintained. Last it was updated was 3 years. कोई बात नहीं, वही दे दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक और, आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगा, पहले आप सेंटोस लाइए एंड सेंटोस का साइज दीजिए। सी दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट? समटाइम क्लाइंट में आस्क यू समथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल, करेक्ट? यस और नो? राइट, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज नॉट मेंटेन फ्रॉम द लास्ट 2 years 3 years, एंड यू हैव टू प्रूव इट। कहाँ पे लिखा है सर? It is हाँ ठीक है, Duplicated. भाई मुझे साइज चाहिए, आई नीड ए साइज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे साइज चाहिए। आई नीड ए स्ट्रेट फॉरवर्ड साइज। देखें भाई, 204 MB. सेंटोस, हाँ किसी एक ने तो कर दिया, 200 सेंटोस MB. 7 इमेज डाउनलोड कर दिए। जो डिस्क यूज कर रहा है 301। ओके, करेक्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये इतना कंज्यूम कर रहा है और द एक्चुअल साइज है दिस, कंटेंट का साइज दिस मच है और एक्चुअल इतना यूज कर, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, व्हाट इज द कमांड? CentOS 7.9, आपको जो भी वर्जन है आपको वो भी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? एंड द साइज विल बी वेरी बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, गुड 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 गुड। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सर अभी हमने सेंटोस डाउनलोड करी, वी डाउनलोडेड द सेंटोस। ओके, यहाँ पे भी हम लोग गए सेंटोस, CENTOS, मैं वर्जन भूल गया 7। ओके, दिस इज 301 MB की थी। ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके यार, ये तो 300 MB और 109 MB बहुत बड़ा हो गया। आई वॉन्ट a लोएस्ट साइज इमेज, लोएस्ट, लोएस्ट एलो, लोएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम साइज। ओके, पहले तो उसका Alpine नाम बताइए। images. Alpine. Alpine तो image. उसका Alpine. Alpine. Okay. Alpine. Okay. The name is correct. Alpine. Okay. Alpine is a correct name. Okay. Alpine is an operating system. Now, some people will think, sir, Alpine is really operating system. Yes, Alpine is an operating system. अगला question will come in your mind, sir, do really use in production environment? क्या बोलते हो? Yes, no? होता है कि Yes, नहीं होता है? we basically use it to create another images from the Alpine images. प्रोडक्शन में यूज करते हो या नहीं? Yes, no? Yes. यस करते हैं. करते हैं? Yes. आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, हाँ करते हैं। ओके, नहीं है भरोसा, कोई बात नहीं, चलो गूगल पे चलते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, अल्पाइन इज यूज्ड इन PRODUCTION, चेक करते हैं क्या बोलता है AI चैट। अल्पाइन इज वाइडली यूज इन टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, भाई वाइडली यूज होता है। ठीक है, इन द डॉकराइज एनवायरनमेंट, यस इट इज यूज्ड। ओके, अब इसका साइज क्या है गाइस? ये तो 5 MB यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अप्रोक्स टू 5 आई नीड एग्जैक्ट साइज फ्रॉम, मुझे आपसे चाहिए। वेट, डाउनलोड इट एंड गिव मी द एग्जैक्ट साइज। स्क्रीनशॉट चाहिए, 1 MB 2 MB अपनी मर्जी से मत लिखो, स्क्रीनशॉट चाहिए, आई The नीड। CentOS का ही कि क्या which one? अल्पाइन का, अब अल्पाइन सेंटर्स हो गया खत्म। सेंटर्स के पीछे खत्म, अब अल्पाइन पे आ जाओ। यस, Okay. एंड सम पीपल आर टेलिंग दे हैव टू गो ऑफिस। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, आई विल डू इट, मैं कर देता हूँ। ओके, DOC के Docker pull ALPINE Alpine. Okay, and it is downloading. Yes, it is downloaded. Okay, Docker images and the Alpine size came for me is 13.1 MB. Okay, see Google answer मैं गलत नहीं बोला, करेक्ट नहीं होता है, but see आपको एग्जैक्ट आंसर यू हैव टू सी। एग्री? यस और नो? गूगल तो 5 GB 5 MB बता रहा था। ओके, अप्रोक्स 5 MB। भाई ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, ये 3 MB अगर कंटेंट साइज है तो दिस, और यूजर साइज है 13.1। इज अंडरस्टूड? समझ में आया? यस नो? हाउ वाज द टुडेस सेशन? कैसा था आज का सेशन? Very good, sir.
Introductory and informative, actually. समझ में आया? Everyone, guys, everyone, can I get a Yes. one line feedback in WhatsApp group? एक one line feedback into the WhatsApp group. Very Generate the informative, sir. summary. थैंक यू। जनरेट द समरी। भाई अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये 1.5 घंटा पढ़ तो लिया, इसका रिवीजन कैसे करोगे? जनरेट द समरी प्लीज। जनरेट द समरी। वी हैव एआई, अपने एआई का रियल यूज करो। ओके। जनरेट द इंटरव्यू क्वेश्चन, जनरेट द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आपको 3 वैरायटीज के समरी जनरेट करनी है। डू इट क्विकली। आई एम चेकिंग इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा हूँ। आई एम चेकिंग इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, देखते हैं। ओके। ओके। एक बंदे ने बोला है इंफॉर्मेटिव बिगिनर जर्नी। हाँ, बिगिनर जर्नी अभी हमने आज से स्टार्ट किया है, बिल्कुल ठीक है, कूल। ओके, ठीक है, और चलते हैं लोग। ग्रेट सेशन, थैंक यू, इजी टू अंडरस्टैंड, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, कूल। ओके गाइस, मुझे समरी चाहिए यार, आई नीड ए समरी। फर्स्ट कंटेनर, क्या बात है, अरे माय गॉड, किसी ने कुछ तो बना लिया, बट अच्छी बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी 20 बनने चाहिए अपने गाइस। टारगेट, मेक ए टारगेट कि नेक्स्ट 4 डेज में 20 कंटेनर्स बनने चाहिए। एग्री? यस नो, ये आपका टारगेट है, ठीक है। एज यूजुअल, ग्रेट, थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। समरी, समरी कहाँ है? समरी, 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 समरी। हाँ, आ गई, देवराज ने भेजा। क्लास समरी, इंट्रोडक्शन टू डॉकर, यस हमने करा है। की कॉन्सेप्ट करा है, वर्चुअल मशीन और डॉकर के बीच में डिफरेंस पढ़ा है, वर्चुअल मशीन की कुछ थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, नाइस। ओके, कुछ डॉकर के अंडरस्टैंडिंग करिए, ठीक है, डॉकर आर्किटेक्चर करा है, ठीक है, लाइट वेस, ओके, कंपेयर करा है। 3 पार्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, क्लाइंट, डेमन और हब, 3 पार्ट में आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, कूल। ओके, ठीक है, कूल, और कुछ कमांड्स, ठीक है, कुछ समरी। यस, ये समरी हो गई। अब इंटरव्यू क्वेश्चन जनरेट करिए, जनरेट इंटरव्यू क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। विकास सर, यस, प्रतीक ने। विकास, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, okay. प्रतीक इज जनरेट सम सिनेरियो क्वेश्चन। कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके, ठीक है। यू हैव अ डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, नोटिस दैट कंटेनर इमेज। अरे भाई, ऐसे ही तो, यही तो सिनेरियो आता है गाइस, सी दिस, मेरे को तो मजा आया। गाइस रीड दिस, इसको पढ़ते हैं। ओके, जो ये आया है प्रतीक भाई ने जो भेजा है। ओके, ठीक है। ओके, सी एक क्वेश्चन, दिस लास्ट क्वेश्चन। ओके, कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। यू रन द डॉकर हेलो वर्ल्ड इमेज एंड नोटिस द कंटेनर इमीडिएटली एग्जिस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। करेक्ट, यस और नो? ऐसे ही हुआ था, राइट? योर Yes. मैनेजर आस्क्ड व्हाई द कंटेनर इज नॉट रनिंग। डू हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बिहेवियर? भाई अभी अपन ने डिस्कस किया, करेक्ट, यस और? ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा Yes, ही sir. होता है, Yes, sir. राइट? व्हाई? बिकॉज उसने अपना पर्पस था, उसका काम करना था, उसने अपना पर्पस कंप्लीट करा एंड वर्क इज डन, तो इट इज इनटू द एग्जिट स्टेट। इफ यू वांट टू रीरन इट, रन द डॉकर स्टार्ट कमांड एंड रीरन इट। तो गाइस आई वांट, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका समरीज वो आ रहे हैं, सिनेरियोज आ रहे हैं, समरीज आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज रीड इट। यार ये जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज होती है, यू हैव टू डू इट एवरी डे। अगर इस टाइप के 10 सिनेरियो। सर प्रतीक का मैसेज नहीं आया सर मुझे, आई मीन इट्स। अरे मैं भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत, सर आप जनरेट करो ना, सी यू हैव टू बैच जनरेट। है ना? It is वो a शायद बैच part of the 41 में chat होगा, group. वो शायद 41 में बैच होगा, 42 में होगा। है ना? 40 to बैच कोई बात 43. नहीं, है ना? आप लोग जनरेट करो गाइस, आप लोग जनरेट करो। ओके, बैच आप 43 अपने में कर डलवा दो। हाँ हाँ, मैं सिनेरियो में 20th उसमें डाल अप्रैल। दूंगा, कम्युनिटी में। मैं कंट्री कंट्री उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस, ये चीज हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है। अंडरस्टूड, यस और नो? राइट? कल अगर प्रतीक ने जनरेट नहीं किया तो आपको खुद करना है। क्या ना? तो डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, सिंपल सी बात है। ओके, है ना? आपको सर खुद करना है। ओके, यू हैव टू जनरेट, आप अपने नोट्स बनाइए। ओके, और गाइस एवरी डे ये 10 सिनेरियो अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, राइट, नेक्स्ट 2.5 मंथ भी, ओके, बहुत होते हैं, राइट, 10 सिनेरियो बहुत रोज रोज डेली अगर करते हो, अगर 10 इंटरव्यू क्वेश्चन से 20 इंटरव्यू क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हो, भाई आप 1000 क्वेश्चन तो आप अपने आप पढ़ लोगे इसी समरी से। और यही आपकी प्रैक्टिस होगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट गाइस, मैंने कल, यस्टरडे आई गिवन यू असाइनमेंट्स, आपने असाइनमेंट्स करे? बोलो कि नहीं करे? अब बताओ कितने लोगों ने सच में असाइनमेंट्स करे? Yes, Vikas, ये we वाले did. करें? गाइस यू डिड? खुद से पूछो, करे कि नहीं करे? मास्टर एंड डीमन वाला ना? मैं आज हाँ, करूंगा। आज मास्टर एंड करोगे डीमन ठीक है, वाला ना? वीकेंड। हाँ, Master and नहीं, slave वाला मास्टर ना तो, सर? मास्टर तो वो परसों का था, मास्टर सिर्फ तो परसों का था। ओके, ये तो जॉब के लिए है। ओके, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कि आपको कैसे स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, कैसे आपको बोलना है, हाउ इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर डे टू डे एक्टिविटीज, ये वाला। ओके, ये जॉब असाइनमेंट है, वो तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट था, आर्किटेक्चर असाइनमेंट था। ओके, वो परसों का था, कल का ये दिया था। नहीं किया, प्लीज डू इट बाय टुडे।
ओके, ये आज भी नहीं कर पाओगे, वीकेंड पे। इज दैट ओके? अरे यस नो? Yes, sir. Yes, sir. करना ही है, कोई चॉइस Yes, नहीं sir. है, बस Yes. करना ही है। अगर जॉब उठानी है नेक्स्ट 2 महीने में तो करना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है। ओके, चलो कूल। ओके, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द सेशन। ओके, यूट्यूब पे भी स्ट्रीमिंग चल रही है। ओके, चलो गाइस, वी कैन वाइंड अप दिस स्ट्रीमिंग एटलीस्ट। ओके, और हम लोग जाते हैं Q&A पर। इज दैट ओके? कूल। Yes. एक बार फाइनली बता दो भाई, कैसा लगा 1.5 घंटा? Sir, हाउ बहुत वाज द बढ़िया। लास्ट 1.5 आवर? Amazing. मजा आया? Yes, sir. Awesome, sir. Very informative. Amazing, sir. हर सेशन ऐसे ही That's my होता है, एवरी first सेशन? time I am just doing Yes, the sir. Docker thing, so it's very easy for me, right, as of now. हाँ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है सर। मैं फ्रेशर हूँ या XYZ व्हाटएवर, मेरे लिए डॉकर नया है, पर अंडरस्टैंड, समझ में आया गाइस? Yes. एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. दैट्स इट। Yes, ओके, because so नाउ yes means क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन है?